Why do you need to mention today as the reference है? Mr. Rahul, तो आपने एक प्रेम सिंह वाला जजमेंट का पूरा लिमिटेशन का एक नोट बना के दिया था एक केस में. किसका? लिमिटेशन से रिलेटेड सारे जजमेंट्स का ये साइन नहीं, प्रेम सिंह लिमिटेशन एक्ट आपको याद है? एक पूरा अभी किसी सेकेंड अपील में ही दिया, अभी रिसेंटली शायद प्रोनाउंस भी किया, जिसमें हमने पूरा वो नोट आपने दिया था कि कौन कौन से जजमेंट्स पे वेयर इट इज नेसेसरी टू चैलेंज whenever it comes in the way. ठीक है, वो खत्री होटल्स वाज वन ऑफ द मेन जजमेंट बाय दिस. आपने वो ना एक पूरा नोट ही बना के. अच्छा, हम देख कई सारे जजमेंट्स को रेफर कर. ठीक वो नोट मेरा मिसप्लेस हो गया. अच्छा, मैं देख तो क्योंकि वो बहुत अच्छा नोट था, कई केसेस में यूजफुल हो सकता है. नहीं ठीक है, मैं इसी में होगा, मैं देख लूंगा. हां, Rashid, this is just regarding serving of notice. The Rashid was directed on 28th of this March, Your Lordship, to file requisition by 2nd, Your Lordship, 2nd of April. But now, because the date has passed, Your Lordship, it is not being accepted. I'm just praying that this will be accepted. ऐसे भी हो सकता है ना, उसके लिए आपको टू बी मेंशन में मैटर में जाना पड़ेगा. Your Lordship, this may come on orders, Your Lordship. I'm praying. अभी आपके अदर साइड आए नहीं है मिस्टर गुप्ता, तब तक एक बैच मैटर है फर्स्ट अपील का. From supplementary list for financial item 1, रिस्पोंडेंट का first appeal 82 of 2017. एक बात आप हमको बताएं रिकॉर्ड से, ये जिस सेलिट के आधार पर 1100 या जो फिक्स किया है ना, वो सेलिट एग्जिबिट हुआ है? हाँ, रेट रिपोर्ट में आया है. रेट रिपोर्ट से एग्जिबिट हो जाता है वो? उसमें सारा डॉक्यूमेंट आता है. नहीं है ना, इसीलिए तो हम आपको बोल रहे हैं. नहीं, मेरा काम नहीं है, वो स्टेट का काम है. अंडर सेक्शन 19 में ये सारा इंफॉर्मेशन कोर्ट रेफरेंस कोर्ट को देना, और दिए है. अगर हमको दिखाइए आप LCR हमको जरा, ये है ना, ये दिखाइए, दीजिए इनको LCR. लाइए हम बता देते हैं कहाँ पे क्या है. लाइए देखिए, ये इनका आया है पूरा रिकॉर्ड कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल हुआ है. एक सेकंड, इन्होंने अपना 105 में इनका लिस्ट, एग्जिबिट लिस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओपी, राइट? ये 105 to 106 है, एंड एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट ऑफ ओपी है 107 to 132, राइट? टोटल 26 पेजेस, करेक्ट? अब आप इसमें देखिए, इन्होंने जो दिया है इसमें वो एग्जिबिट नहीं हुआ, इन्होंने फॉरवर्ड ही नहीं किया. ये दिखाइए बी, एग्जिबिट बी, मूल्यांकन खतियान 20 पन्ना. भी मूल्यांकन उसमें खतियान सारा सेलडीट का ये रहता है, विवरण रहता है कि कौन सेलडीट कौन सा ईयर में बिका है, कितना बिका है, क्या रेट से बिका है. तो उसी के आधार का पर कॉपी तो नहीं रहता है. नहीं, उसी के आधार पर ये रेट कलेक्टर फिक्स करते हैं अंडर सेक्शन 11 में कि क्या रेट होना चाहिए. वो सिप्टन का आधार पर, कभी एवरेज करके. तो वो बट सेल डीड एज सच वाज नॉट नहीं, एग्जिस्ट. सेल डीड नहीं एग्जिस्ट होता है. इसमें वही मूल्यांकन खतियानी होता है, उसमें सारा चीज लिखा रहता है. अच्छा, कि कौन सा सेल डीड है, और उसके बाद तो आप हमको बताइए 2003 का सेल डीड का डेट क्या है? हम दे तो जल्दी, क्योंकि उसका डेट कहीं जिक्र नहीं है. दर प्रतिवेदन एग्जिबिट सी, एग्जिबिट बी शायद है, या याद बी नहीं. तो मूल्यांकन खतियान. हाँ, जो भी है आप देखिए. लॉर्डशिप कौन सा बताएं, पूरा पढ़ दें क्या? नहीं, आप खाली 2003 वाले एग्जिबिट का आप हाँ, हमको 2003 सेलडीट नंबर 1307 1307 डेटेड 24/1/2003. टोटल एरिया हुआ है 14 डिस्ट्रिक्ट. रेट है 14,500. एक सेकंड, 14 डिसमिल, रेट है 14,500. 500. तो इसका क्या रेट हुआ?
ये टाइप ऑफ द लैंड आपको फिर वो वैल्यूएशन खतियान में देखना होगा। दूसरा है 4887 2003 का एक ही है, दो है। बताइए। 4887 हाँ 11/3/2003 11/3/2003 टोटल एरिया है 3 डिसमिल 3 डिसमिल और इसका 4200 रुपया मिला है 4200 टोटल 17 डिसमिल 4200। हाँ 4200। तो ये जो पर डिसमिल का रेट इन्होंने आप उसको कैलकुलेट किए मेथड से। ये औसत दर प्रति एकड़ 1,10,000 आया टाण का। ये किस सेल्डी से है? ये रिसेंटली तो बताया लॉर्डशिप इसमें। ये दोनों सेल्डी टाड़ का है। हाँ ये टाण का तो दिखा रहा है कि सब टाण का रखवा है ये सब, अच्छा, लेकिन टाण कितना ये नहीं पता है। हाँ ठीक है। और- लेकिन और- ये और- औसत दर कैसे आया आपका? ये तीनों साल का अलग अलग निकालते हैं हम लोग, मतलब हम लोग जैसा जानते हैं अभी तक हाँ। कि जैसे फर्स्ट ईयर का जैसे टोटल जो जोड़ आएगा कीमत, टोटल क्षेत्रफल से जितना एरिया है उससे हम लोग भागा दे देते हैं, हाँ, उससे ठीक है। औसत आ जाता तो है। टोटल और फिर जोड़ तीनों इसका का करते हैं। टोटल जो 3 मतलब तीसरा क्या हुआ? दो ये इसमें 3 साल का लिया गया है, एक तो 2 का 3 2 ही साल का लिया गया है। कहीं ये तो कहीं 2 ही सेल्डी है ना, तो 3 साल का कैसे होगा? नहीं लॉट से टाण का 1 2 3 4 सेल डीड आया है। 4 सेल्डी। जी 2002 में 2 सेल डीड आया है और 2003 में 2 सेल डीड आया है। 2001 में नहीं आया है। 2002 का बताइए। 2002 में 14408 ये सेल डीड नंबर हुआ और डेटेड 9/10/2002। ये 22 1/4 23,000 में बिका है। और दूसरा है 17191 ये डेटेड है 19/12/2002। ये 15 3/4 35,000 में बिका है। इसका औसत निकाला गया 1,10,000 रुपया। ये कितना में बिका है? 15 3/4। 23,000। ये तो 23,000 उसका भी था, इसका भी 23,000। ये तो टाण का। अब हम इसका ये आपको खेत का बता रहे हैं से। देखिए हमारा कंसर्न इसलिए है, आप जरा ये देखिए पेज नंबर 22, इंटरनल पेज 22 ऑफ द ऑर्डर। इंटरनल पेज 22। हाँ, ये संकलित विक्रय आंकड़ा के से जाहिर है ना? हाँ संकलित विक्रय आंकड़ा से जाहिर है पढ़िए। कि 2000 में खेत से संबंधित कोई विक्रय के वाला नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको अच्छा ठीक है 2000 से कोई नहीं है। करेक्ट। आगे, परंतु एक मिनट। परंतु टाण से संबंधित केवला का औसत दर 162 रुपया प्रति डिसमिल रहा। इसी तरह 2001 में खेत के लिए औसत दर 1339 रुपये एवं टाण के लिए 1320 रुपये था। वर्ष 2002 में टाण का औसत दर 1525 रुपये एवं वर्ष 2003 में टाण का औसत दर 1100 रुपया प्रति डिसमिल रहा है। इन 2 वर्षों में खेत से संबंधित विक्रय दर प्राप्त नहीं। इसी तरह से संकलित विक्रय दर से ये जाहिर होता है कि ग्राम कोड़ी में खेत से संबंधित विक्रय का अधिकतम दर 1319 रुपया प्रति डिसमिल और टाण के लिए 1100 रुपया से 1526 रुपया प्रति डिसमिल रहा। तो ये 1526 छोड़ के 1100 कैसे लेंगे? क्योंकि ये रेंज बता रहे हैं ना, जी टार का बता रहे हैं 1100 से ये 1526। जो वैल्यू आया लॉट से ये लगान निर्धारित करने के लिए आया है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आया है। 1908 में हमारा सर्वे हुआ तो लैंड मेरा टाण और खेत लिखा गया, प्रति लिखा गया, तो क्या लैप्स ऑफ 116 इयर्स 116 साल के बाद देखिए आपने इसको प्रूव नहीं कर पाए कि आपका जो है लैंड जो है has changed its किए nature। लॉट से
हम लिखे हैं। आपका देखिए इसमें फाइंडिंग ऐसा नहीं है। फाइंडिंग ये है कि जैसे बाकी जितने भी केसेस हैं सब में फाइंडिंग आ रहा हम है। लॉर्ड सिर्फ आते हैं लोग, हम किए हैं ये मेरा जब जब लॉर्ड सिर्फ हमको 2 मिनट है। देखिए बाकी सारे केसेस में एक कॉमन फीचर है दैट दे हैव रिजेक्टेड ऑल द रेट्स और फ्लैट रेट में ले लिए हैं। करेक्ट, इन ऑल द केसेस, जितने भी केसेस आपने साइट किए सब केसेस में सारे रेट्स को रिजेक्ट किया है और बोला है कि पूरा कमर्शियलाइजेशन हो गया है, इसीलिए हम इसको ऐसा फ्लैट रेट में, किसी में 7,000, किसी में 6,000, किसी में 8,000, व्हाटएवर, एक केस में सर्कल रेट में हाई कोर्ट ने वो fix इसलिए हुआ लॉर्डशिप क्योंकि ये सबसे एक साथ 10-12 गांव का जमीन अधिग्रहण हुआ एक ही गांव, एक पंचायत में, एक ही काम के लिए, एक ही बॉडी के द्वारा। तो ये जो जजमेंट आया ये सबसे फर्स्ट में आया, बाकी सब में जजमेंट बेस्ड जजमेंट आया है कि नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक ही रेट देना है। नहीं, तो बाकी सब में सबको एक ही रेट देने का भी फाइंडिंग नहीं है। ठीक है। बाकी सब में ये है कि ये एक मतलब फ्लैट रेट में करना है। एक फार्मूला इसमें भी फ्लैट रेट का कहानी किया है, बोला है कि धान को धान वन ले लेंगे, 2 कैटेगरी कर दिया इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बी द कैटेगरी। एक फार्मूला तय किया गया, ओचरा का जो जजमेंट आया कि 8,800 रुपया होना चाहिए, उसके आधार पर जमीरा का हुआ कि नहीं 8,000 होगा, उसके आधार पर तेलियातू का 7,000 हुआ क्योंकि वो कैंटोनमेंट से थोड़ा दूर था, उसी के आधार पर सिलवार कला का 7,000 हुआ, ओचरा में तो 20,000 रुपए तय हुआ हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन लोअर कोर्ट में 8,800 हुआ था। नहीं, वो तो एकदम ही कैंटोनमेंट के करीब, इसलिए 1,000 रुपया काटा गया तेलियातू में। और तेलियातू को बेस करके मेरा जो एक्विजिशन का डेट है, तेलियातू छोड़ के सिनवार कला, कडरू, गाड़ीदाग और कोड़ी एक ही है, तो एक में 7,000 मिला, एक में हाईकोर्ट से 7,000 मिला, वहां 3,000 रुपया था, एक में 6,000 मिला, तो हमको कम कैसे मिलेगा? हम वही बोल रहे हैं कि ये जो औसत रेट आया है, बाकी सब केस में फाइंडिंग है, इसमें बाकी भी है सारे लॉर्डशिप, नहीं, बाकी सारे केसेस में फाइंडिंग है। इसमें भी है लॉर्डशिप। एक सेकंड, बाकी सारे केसेस में फाइंडिंग है कि ये कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए इसमें फ्लैट रेट देना है। लॉर्डशिप अगर मैप देखा जाए, मेरा एक्विजिशन एक ही दिन का है, तो उसी पर हम आ रहे हैं लॉर्डशिप। हमको 2 मिनट कीजिए। अगर 1908 में एक्विजिशन हुआ तो मेरा वहां पर सर्वे में लिखा गया कि ये टाड़ है। देखिए आप रिपीट मत करिए। हाँ, ठीक है, आप लॉर्डशिप। हमको कौन सा तो- एविडेंस है बताइए कि हम ये ले लें लॉर्डशिप। कि पूरा कमर्शियल हो गया है। जी लॉर्डशिप, बताइए कहाँ वो एविडेंस है? वो सारे एविडेंस को रिजेक्ट किया हुआ, इसीलिए हम आपसे वो पूछ रहे हैं। लॉर्डशिप अगर वो किए हैं तभी तो हम यहाँ हैं। हाँ बताइए कौन सा ऐसा एविडेंस है जिससे ये पता चले कि ये पूरा एरिया का कमर्शियलाइजेशन। लॉर्डशिप थोड़ा सा पीछे जाना होगा उसके। हाँ बताइए। अगर ये इसमें लिखा हुआ है कि नहीं ये टाड़ है, खेत है, तो 116 साल तक तो हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे होंगे। Assume कुछ नहीं तो करेंगे, चेंज एविडेंस दिखाइए। या सरकार तो कुछ नहीं की होगी। भाई आप एविडेंस दिखाइए, आप एविडेंस दिखाइए कि पूरा एरिया कमर्शियल हो गया। लॉर्डशिप दिखाइए दिखाइए, पतरातू कौन सा एविडेंस हम पढ़ें? सब दोनों। इनर पेज 16 12 9 हाँ, बताइए। हम एविडेंस कब तक वो पढ़िए। बताइए। मेरा गांव फॉर लास्ट 4 लाख,
मेरा गांव कोड़ी पतरातू अंचल में पड़ता है, जो काफी विकसित क्षेत्र है। झारखंड का ये कहाँ- कौन सा पेज नंबर 15? पेज नंबर 15 पैरा 9 पैराडाइम। चार लाइन ऊपर। हाँ, झारखंड का पतरातू एक ऐसा अंचल है लॉर्डशिप जो सबसे विकसित है। जनरल नॉलेज से हमने चर्चा मेरा गांव कोड़ी पतरातू अंचल में पड़ता है। ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? इम्प्यून ऑर्डर जी, पेज 15, पेज 15 आगे इंटरनल पेज 15 और पैरा 9। पैरा 9 चार विचार लाइन- बिंदु संख्या 27। मेरा गांव कोड़ी पतरातू अंचल में पड़ता है, 4 लाइन ऊपर से जो काफी विकसित क्षेत्र नहीं, है। आधा मत पढ़िए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक कहीं से बीच से पढ़ने लगते हैं एक अच्छा लाइन। लॉर्ड, क्या आवेदकगण की अर्जित जमीन का बाजार दर बढ़ती योग है? यदि हाँ है तो क्या दर हो सकता है? सभी आवेदकगण की अर्जित जमीन का अधिग्रहण की अधिसूचना की अंतिम प्रकाशन तिथि 4/1/2007 को आसपास को प्रचलित बाजार दर के आधार पर क्या बाजार दर होना चाहिए? ये डेट गलत है ना? हाँ, ये थोड़ा ठीक। इसके लिए साक्षियों के साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करते हैं। आवेदक गण की ओर से प्रस्तुत साक्षी संख्या 1 धाना बेदिया द्वारा टंकित रूप में शपथ का मुक्त परीक्षण दाखिल किया गया, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि उसकी जमीन का कीमत काफी है, जमीन का दर कम आंका गया है और जमीन का वर्गीकरण का दर किया गया है, जो कि गलत है। समान दर से सभी जमीन का कीमत होना चाहिए। आगे कहा है कि मेरा गांव कोड़ी पतरातू अंचल में पड़ता है, जो काफी विकसित क्षेत्र है और अगल बगल के गांव पोचरा, बुजुर्ग जमीरा, तेलियातू, सिंधवार कला, छोटकी सिंधवार गांव की जमीन इसी काम के लिए दी गई है, जो सभी एक समान है, मानी सबकी जमीन एक समान है। 1984 में छावनी काट के लिए ग्राम बुजुर्ग जमीरा एवं पोचरा का जमीन अधिग्रहण हुआ था, जिसमें न्यायालय के द्वारा 2500 रुपया प्रति डिसमिल तय किया गया था। 1986 में दूरसंचार विभाग के द्वारा भी अधिग्रहण हुआ था, जिसमें 6000 रुपया डिसमिल दर तय हुआ था। आगे कहा है कि मेरा गांव रामगढ़ शहर से सटा हुआ है। गांव में स्कूल, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र और 20-25 साल से चूना पत्थर का खदान है। बड़का खाना भुरकुंडा रेलवे स्टेशन भी निकट में है तथा गांव में सटे काफी कुलवरियां हैं। इस तरह से वह गांव काफी विकसित है, परंतु विकसित गांव के अनुसार बाजार दर तय नहीं किया गया है। इस साक्षी ने प्रतिवेदन में कहा है कि जमीन का खाता संख्या 33 है, ये रकबा याद नहीं है, जमीन धान खेत एवं टाड़ प्रकृति का है। आगे कहा कि बड़का खाना रेलवे स्टेशन मेरे गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है तथा पतरातू स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गांव दिगवा, तेलियातू, सिंधवार कला, छोटकी सिंधवार, दुर्गी मेरे गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। बुजुर्ग गमीरा तथा पोचरा मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे कहा है कि हम लोगों का गाड़ी चढ़ने के लिए घुटवा जाते हैं, घुटवा 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम भी अपने मोराबादी, मेरा घर है लॉर्ड सिर्फ, हम भी प्लीज अपना होमवर्क इस तरह से मत करिए। दूरी पर है। कंडिका 20 में कहा है कि जमीन ऊंचा नीचा था, रेलवे जमीन को समतल बना रहा है। रेलवे आने से वहां धान खेत 2200-2300 रुपया डिसमिल बिका था। इस तरह साक्षी के मुख्य परीक्षण से पढ़ने से ये लगता है कि गाड़ी गांव रामगढ़ के आसपास है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कोड़ी गांव पतरातू अंचल में है और रांची पतरातू रोड से 3-4 किलोमीटर के अंदर में है। अर्थात रामगढ़ पतरातू पक्की सड़क पर स्थित नहीं है और कोड़ी गांव में विकास का कोई लक्षण नहीं है, बल्कि 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव में कोलवेरियां वगैरह है। उसके बाद लॉर्डशिप साक्षी नंबर 2, ये आपके इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको ये बड़का काना तो लिया है, बुरकुंडा नहीं लिया। तो बुरकुंडा का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। बुरकुंडा के बारे में भी आपने बोला है कि रेलवे स्टेशन के करीब है। तो बुरकुंडा और बड़का खाना एक ही जगह में, अगल बगल में है। बड़का खाना में हमारा एडमिटेड है कि 2-3 किलोमीटर में है, तो गांव से अगर हम बस पकड़ने जाएंगे तो बड़का खाना जाएंगे 2-3 किलोमीटर में। वहाँ स्कूल है लॉर्डशिप, कॉलेज है, सिनेमा हॉल है, पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है। और बताइए, ये गांव में सारी सुविधा तो नहीं हो जाएगी। मेरे गांव में कारखाना नहीं है,
लेकिन स्कूल वगैरह की सुविधाओं के बारे में प्राथमिक स्कूल तो रहता ही है, बाकी जितना स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, सब 2-3 किलोमीटर में है। अच्छा नीचे साक्षी दो साक्षी 2 दिनेश कुमार विद्या ने भी अपने मुख्य परीक्षण में सरकार के द्वारा बहुत कम मुआवजा देने की बात कहा है और जमीनों का वर्गीकरण कर मुआवजा तय करने की बात को सही नहीं कहा है। इससे भी छावनी एवं दूरभाष विभाग के द्वारा आसपास में अर्जित जमीन होने की बात, ज्यादा मुआवजा देने की बात कही है। इसने इस गांव में कोलवरी होने की बात कही है। इसने जमीन का मुआवजा 1500 रुपया प्रति डिसमिल का मांग किया है। प्रतिष्ठित ने कहा है कोड़ी गांव से बड़का खाना 3 किलोमीटर, पतरातू 8 किलोमीटर, भुरकुंडा 6 किलोमीटर, सयाल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसने कहा है कि अर्जित जमीन खेती बाड़ी एवं टाड़ है। कोड़ी गांव में लोग बड़का खाना बाजार एवं पढ़ने के लिए जाते हैं। स्पष्ट है कि कोड़ी गांव में यातायात का कोई साधन या पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं है। इसके साथ से यह जाहिर नहीं होता कि ग्राम गौड़ी विकसित गांव के श्रेणी में आता है। साक्षी 3 हीरालाल मुंडा ने अपने टंकित शपथ पर साक्ष्य में कहा है कि ग्राम बुजुर्ग जमीरा, तेलियापुर, सिंधवा कला, कटरू, दाड़ीदाग, मसमोना, दुर्गी की जमीन का अधिग्रहण एक साथ हुआ और एक ही कार्य के लिए हुआ है। इसमें जमीन का प्रचलित दर 15 लाख रुपया प्रति एकड़ मांगा है और कहा है कि जमीन का दाम समान दर से मिलना चाहिए। इसने आसपास के क्षेत्र में बड़का खाना स्टेशन, भुरकुंडा, पतरातू रेलवे स्टेशन, रामगढ़ रेलवे स्टेशन एवं काफी कोलवेरी होना बताया है। उसने 4 रेलवे स्टेशन को अपने गांव के करीब बताया है। यह संभव नहीं है कि उस गांव के आसपास में चारों रेलवे स्टेशन है। निश्चित ही एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी होती है। साक्षी ने कोड़ी गांव में पतरातू अंचल में होना बताया है। रामगढ़ शहर से सटे होने की बात कही है, यह सही नहीं है। आगे उसने कहा है कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए लिया गया है। इसमें भी छावनी एवं टेलीफोन विभाग के लिए किए गए अधिग्रहण के संबंध में जमीन का दर ज्यादा मांगने की बात कही है। इस साक्षी ने एलआर केस नंबर 86 से 123, प्रथम अपील संख्या 84 से 2190, 8490, एलआर संख्या 2190 से 3190, एलआर संख्या 56 से 7090, अपील संख्या 15190 से 165 पारित निर्णयों की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल करने की बात कही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मेरा गांव मेरी जमीन अर्जित हुआ है जो 1.22 एकड़ है। केस नंबर याद नहीं है। इसमें कंडिका 9 में कहा है ग्राम बुजुर्ग जमीरा मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी एवं ग्राम सिंधवा 1.5 किलोमीटर की दूरी एवं कटरू से 2 किलोमीटर की दूरी पर होने की बात कही। अब हम पीडब्ल्यू में हम लॉट से हमको इजाजत दिया जाए कम हो सके। पारा 4 पीडब्ल्यू 3 को 1 करना 1 है। PW1 PW1 तो आप पढ़ लिए ना, क्या पढ़ नहीं नहीं, जो आप बोल रहे थे कि विकास में आप क्या क्या लिखे उस पर बोल रहे हो। पैरामीटर कैंटोनमेंट के करीब तो आपका नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। अंचल एक ही, अंचल तो भाई पूरा देश एक ही है। अगर अंचल एक है तो स्टेट भी एक है, पूरा देश भी एक है, ऐसा नहीं करिए। जब कॉम्पनसेशन की बात होगी, एक पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जमीन एक साथ अधिग्रहण हुआ। देखिए प्लीज इस तरह से नहीं है, आप करिए। जो चीज रिकॉर्ड पे नहीं है ना उसके बारे में कुछ मत बोलिए। पारा 5 PW1 यह है कि हमारा गांव रामगढ़ शहर से सटे हुए है। पक्की सड़क राजमार्ग रामगढ़ पतरातू होते हुए रांची जाती है, जो आया हुआ ये तो डिनाई कर दिया है। 2-3 किलोमीटर में है। ये तो 2-3 किलोमीटर तो लॉट से हाईवे से 2-3 किलोमीटर बहुत दूर नहीं होता है। हम भी मोराबादी भी हाईवे से बहुत दूर है, लेकिन विकास तो नहीं ऐसा नहीं है। हमको भी रेलवे चढ़ने के लिए 12 किलोमीटर आना पड़ता है, हाईकोर्ट 20 किलोमीटर आना पड़ता है। तो क्या गांव में सारा चीज हो जाएगा? हम वो बता रहे कि 3 किलोमीटर में है।
तो ये विकास नहीं है तो क्या है? ये जो रेट फिक्स किए हैं ये 116 साल का पुराना जो वर्गीकरण के तौर पर किए हैं वो नहीं लागू हो सकता है इसमें। हम इसलिए इसको लाए हैं प्लॉट से। जो काफी व्यस्तम सड़क है, हजारों की संख्या में गाड़ी का आवागमन होता है। हमारे गांव का रास्ता भी पक्की है और व्यस्तम सड़क को जोड़ती है। ये तुम खुद लिखे। ये है कि हमारे गांव में स्कूल, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र आदि है। ये हमारे गांव में 20-25 वर्षों से चुना पत्थर का खदान है। हमारे गांव से सटे 2 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बड़का खाना जंक्शन और भुरकुंडा रेलवे जंक्शन माने पतरातू रेलवे जंक्शन है। हमारे गांव के बगल में पतरातू अंचल है जो एक मिनी शहर है। लॉर्डशिप वहां पर जिंदल का कारखाना है, स्पंज आयरन फैक्ट्री है। पतरातू ताप बिजली घर है जहां से हम लोग को बिजली मिलता है। इंडो एसाही ग्लास फैक्ट्री है जापान के साथ, जो भी बंद हो गया, वो वर्षों से कैंटोनमेंट है। जुबली कॉलेज है, स्कूल है, सैकड़ों कोलवरी है। स्पंज आयरन का फैक्ट्री तो दर्जनों है। स्कूल का नाम कहीं लिखा है इसमें? वहां पर केंद्रीय विद्यालय है, इन्हीं के द्वारा किया गया। आपका जो जनरल नॉलेज है ना, इसको मत घुसाइए। जो चीज इसमें नहीं है ना, प्लीज डोंट से। इतना ही आप लोग को था तो स्कूल का नाम लेना चाहिए था ना कि ये स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है। ये सब क्यों नहीं आपने एविडेंस में लाया? और यहाँ हमको बोल रहे हैं कि हम टोल जाने के यहाँ पे लिख देंगे कि पारा 9 लॉर्डशिप काइंडली देखा जाए। पारा 9 लॉर्डशिप ये है कि हमारे गांव के बगल में पतरातू अंचल है जो एक मिनी शहर है। भुरकुंडा बिजली घर पीटीपीएस जो काफी वर्षों से चल रहा है। यह है कि हमारे इलाके में पूर्व से ही स्पंज आयरन फैक्ट्री है। यह है कि मेरे गांव से सटे काफी सारी कोलवेरियां हैं जो विगत 50 वर्षों से चल रही है। सोंदाडी, भुरकुंडा, सियाल आदि कोलवेरियां। इस कारण यहाँ देश के अन्य भागों में कोयला का आवागमन होते रहता है। इस कारण हमारा गांव विकसित है। यहाँ की कोलवेरी और फैक्ट्री होने के कारण हमारा गांव विकसित है। ये PW1 का हम पढ़ेगा, PW2 पारा 7 नहीं पारा 6 लॉट से PW2 पारा 6 यह है कि जमीन अधिग्रहण के पूर्व से ही हमारा इलाका काफी विकसित और उन्नत था। गांव के अगल बगल कोलवेरियां एवं थर्मल पावर फैक्ट्रियां आदि है जिससे हमारा इलाका शहर जैसा है। यह है कि हमारे गांव के अगल बगल स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल है। यह है कि हमारे गांव के बगल में रामगढ़ पतरातू रोड रेलवे लाइन है। PW3 लॉट से उसमें तो है तो PW2 का क्रॉस भी पढ़िए तो। PW2 का क्रॉस पढ़िए। पढ़िए जरा PW2 का क्रॉस। रेलवे गाड़ी चलती है तो मुनाफा होता है, जनता को भलाई होता है। पूरी गांव बड़का खाना 3 किलोमीटर, पतरातू से 8 किलोमीटर, भुरकुंडा से 100 किलोमीटर, सियाल से 7 किलोमीटर दूरी पर है। रामगढ़ से बड़का खाना 5 किलोमीटर दूरी पर है। अर्जित जमीन, खेती बाड़ी, टाड़ भी है। पूरी बड़ा गांव है। पूरी गांव के लोग करना बड़का खाना बाजार हेतु गाँव पढ़ने हेतु जाते हैं, बड़का खाना जाते हैं। निशा महिला कॉलेज है, बड़का खाना में निशा महिला। मेरे गांव की जमीन खरीद बिक्री हुआ है। मैं किसी में गवाह नहीं हूँ। मुआवजा का 400-500 रुपया डिसमिल से लेकर 20,000 रुपये डिसमिल होना चाहिए। शपथ पत्र डॉक्यूमेंट भी देखकर बताया कि खतियान में अलावे और कोई कागजात नहीं है। देखा कि इस केस में आवेदक है, मेरे जमीन का केस अभी नहीं है। गलती खाता नंबर 13 क्या नहीं है। आप हमको ये बताइए, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप ले रहे हैं कि बड़का काना कितना दूर है, पतरातू कितना दूर है और क्या भुरकुंडा कितना दूर है। आप डिस्टेंस एक
सवाल पूरा होने के पहले जवाब मत दीजिए। आप ले रहे हैं कि डिस्टेंस वगैरह कितना दूर है, लेकिन आप ये नहीं ले रहे हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में कि जो इस गांव में रह रहे हैं इसका कितना डेवलप। ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। आप ये ले रहे हैं कि पतरातू 5 किलोमीटर, रांची मान लीजिए 200 किलोमीटर। तो एक का क्रॉस एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें सभी बात आया हुआ है। एक का क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरे का क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ तो नहीं पढ़ेंगे ना। एक का क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात सामने आया हुआ है कि वो जमीन जो है अनडेवलप्ड था, रेलवे उसको एक्वायर करने पर डेवलप की है, वो ऊपर गापड़ था। नहीं ऊपर गापड़, इलाका डेवलप या अनडेवलप्ड होता है, जमीन डेवलप या अनडेवलप थोड़ी होता है। नहीं पसंद था तो नहीं लेते। देखो तो रेलवे जब भी बनाएगा तो उसको अपने ढंग से बनाना होगा। आप एकदम कोर इशू में आइए कि ये गांव कितना डेवलप था, इस पर आपने कितना क्रॉस एग्जामिन किया है। इस पर्टिकुलर क्रॉस एग्जामिनेशन में कहीं नहीं है कि स्कूल नहीं है वहां पर, कॉलेज नहीं है वहां पर, या मान लीजिए जो रास्ता बोल रहे हैं देयर इज अ कनेक्टिंग रोड, या बहुत गाड़ियों का आवागमन है। ये सारी चीजें आपने कम से कम PW2 के क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं लिया। लेकिन जो सब जो होने के बाद इसका जो कंक्लूजन और डिस्कशन किया गया है, अगर उसको आप फाइंडिंग पोर्शन देखेंगे, फाइंडिंग में बोला है कि कंटिगुअस है, इसीलिए हम इसमें ताड़वान और धानवान में लेंगे। और भी सब बहुत सारा चीज डिस्कस किया। फाइंडिंग थोड़ा सा जिक्र करते हुए विटनेस का जो एग्जामिनेशन हुआ उसका जिक्र करते हुए उसके बाद उनका क्या आया है, उनका स्टेटमेंट क्या आया है, उनका प्रोसीजर क्या है। तो PW2 तो हम लोग देख लिए क्रॉस एग्जामिनेशन, PW1 का क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़िए। सबसे बढ़िया क्रॉस एग्जामिनेशन किसका है उसका पढ़िए। मेरे ही डॉक्यूमेंट से हमको मारिएगा। 1 का पढ़िए क्रॉस एग्जामिनेशन। हम पढ़ देते हैं। अरे पढ़ने दीजिए ना, आप ऐसा करिएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। आप लोगों को तो पेपर बुक बना के देना चाहिए कायदे से। ये पढ़िए 17 पैराग्राफ से स्टार्ट। हाँ पढ़िए। मैं अपना गांव वालों का केस गवाही दे रहा हूँ, गांव वालों के केस में गवाही दे रहा हूँ। सभी के जमीन का खाता प्लॉट वही बता सकता है। मेरी जमीन की खाता नंबर 33 है, रकबा याद नहीं है। जमीन धान खेत और टाट का टुकड़ी का है। उस मौजा में और लोगों का जमीन रेलवे नहीं लिया है। बड़का खाना रेलवे स्टेशन में मेरे गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। पतरातू रेलवे स्टेशन गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे गांव से बिदुआ और कलतिया छोटकी सिंधवा एवं 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ने जमीन लिया है। किस काम के लिए लिया है ये मालूम नहीं। बुजुर्ग और गजीरा तथा दूसरा गांव मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। रामगढ़ से बड़का खाना राजमार्ग मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग गाड़ी चढ़ने हेतु बुटुआ जाते हैं। गांव से बुटुआ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे गांव में कारखाना नहीं है। चूना पत्थर से चूना तैयार होता है, वहाँ माल ले जाया वहीं से माल ले जाया जाता है। वैसे कोई फैक्ट्री नहीं है। जमीन वहां पर समतल नहीं था, ऊंच नीच जमीन था। रेलवे उस जमीन को बना रहा है, लेबल कर रहा है। मेरे जमीन गांव के जमीन खरीद बिक्री हुआ है। रेलवे आने के पहले धान खेत 2200-2300 रुपये डिसमिल बिका था। 16 डिसमिल बिका था। एक नंबर का जमीन था, 16 डिसमिल बेचा था। 1 नंबर का जमीन 2200-2300 रुपये लुचुआ ने बेचा था। लुचुआ ने बेचा था। रेलवे मुझे नेक्स्ट पर रेलवे मुझे कितना रुपया दे रहा है मालूम नहीं है। मुझे कुल रकबा कितना मिलना चाहिए मालूम नहीं है। आपत्ति के आवेदक वकील साहब बनाने वाले थे। 15,000 रुपया डिसमिल मांग करने के लिए बोले थे। सरकार की ओर से जमीन का नापी जोखी तथा लोगों को दिखाया गया है, कीमत बताए थी। ऐसी बात नहीं है कि सरकार द्वारा मुआवजा का सही आकलन हुआ है। इसी तो इम्पोर्टेंट लॉर्डशिप PW3
गवाह संख्या हीरा, नाम है 3 हीरालाल मुंडा। पैरा 4, कैन आई रीड? यह है कि हमारा क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र का जमीन का अधिग्रहण गांव मानकर किया गया है, जो गलत है। अब हमारे क्षेत्र में सारी शहरी सुविधा उपलब्ध है, इसलिए शहरीकरण के रूप में हम लोगों का जमीन का मूल्य मिलना चाहिए। यह है कि मेरा गांव और हमारे अगल बगल के अन्य गांव सभी पतरातू प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। पतरातू प्रखंड रामगढ़ से सटे हुए हैं और काफी विकसित है। विगत 50 वर्षों से ही पूरे अंचल में उद्योग एवं कल कारखाने एवं कोलवेरियां स्थापित होने के कारण दिन दिन विकास की ओर बढ़ रही है। हमारे गांव के बगल में ही बड़का खाना रेलवे स्टेशन, जंक्शन है, जंक्शन भुरकुंडा रेलवे स्टेशन, पतरातू रेलवे स्टेशन, रामगढ़ रेलवे स्टेशन। इसके अलावा काफी कोलवेरियां जैसे लपंगा कोलवेरी, भुरकुंडा कोलवेरी, गिद्दी कोलवेरी, सोंदाडी कोलवेरी, सिरका कोलवेरी आदि कई कोलवेरियां हैं। इसके अलावा कल कारखाने उद्योग जैसे इंडो एसाही ग्लास कंपनी बासल, अब जिंदल कंपनी, इसके अलावा पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, बिजली घर। इसके अलावा हमारे गांव में चूल्हा पत्थर, सीमेंट पत्थर का उद्यान है, खदान है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक चूना पत्थर कई फैक्ट्रियों में विगत 20-25 वर्षों से आपूर्ति किया जा रहा है। इसके अलावा स्पंज आयरन, लोहा उद्योग, सीसीएल, जेएम ऑफिस। इसके अलावा अंचल पतरातू में कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाएं जैसे डीएवी, बड़का खाना ये 2-3 किलोमीटर में, जेएम कॉलेज भुरकुंडा में जी, कई उच्च विद्यालय तथा मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक विद्यालय हैं। हमारे गांव में बिजली, पक्का सड़क आदि की सुविधाएं वर्षों से तथा चिकित्सा का उचित प्रबंध जैसे सीसीएल का अस्पताल, बड़का खाना रेलवे स्टेशन, रेलवे अस्पताल तथा कई स्वास्थ्य उपकेंद्र जैसे साकी पाली आदि जो हमारे गांव से काफी नजदीक है। तो ये तो इसका क्रॉस आप तो कोई भी गांव में तो सारा चीज तो होगा नहीं, नेचुरल है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में होगा। और हम लाए हैं डीएवी है, स्कूल है, विद्यालय है, रेलवे का अस्पताल है, इनके डिप्टी चीफ इंजीनियर वहीं इलाज कराते हैं। इसका क्रॉस का 12 पैराग्राफ नीचे। हम लोग बस पकड़ने के लिए बड़का खाना आते हैं। बड़का खाना आधा घंटा का रास्ता है। मेरे घर से मेरे गांव में बैंक नहीं है, प्राथमिक विद्यालय नहीं है। भुरकुंडा रेलवे स्टेशन गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर है। प्राथमिक विद्यालय नहीं है, कैसे पढ़े? प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। भुरकुंडा रेलवे स्टेशन ऐसे नहीं कैसे घुस जाता बीच में? पर आगे नॉक नहीं था, लेकिन भुरकुंडा प्राथमिक विद्यालय है। अभी हम पढ़ के निकले इसीलिए हमारा नजर पड़ गई। उसको हम नहीं करना चाहते, ध्यान से पढ़िए। आगे से पढ़ रहे थे तो सुनो। प्राथमिक विद्यालय है भुरकुंडा रेलवे स्टेशन गांव में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अधिकांश जमीन के आसपास कोलवरी नहीं है। भुरकुंडा के आसपास 7-8 किलोमीटर की दूरी में पतरातू गांव है। 10 किलोमीटर पतरातू गांव है से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे गांव में कोई भी कारखाना नहीं है। सरकार के किस दर से मुआवजा दिया जा रहा है पता नहीं। PW 4 से पैरा 4 सेम चीज बोला है, कोई इसमें रिपीट है वो पैरा 3 का। अच्छा, आप अपना गवाही पढ़िए। हाँ, गवाही तो हम अपने इस जजमेंट से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, जजमेंट से पढ़िए। दो गवाह हैं आपके। हाँ, ये
भूमि का निरीक्षण भी नहीं किया गया, ऐसा गवाही में है। दोनों पढ़ रहे। मैं कुमार उमेश चंद्र सचिन सर जूनियर इंजीनियर के ऑफिस इस सेंटर में सकते। मैं वर्तमान में डिप्टी चीफ इंजीनियर इस सेंट्रल रेलवे उत्तराखंड के द्वारा रेलवे की ओर से गवाही देने प्राप्त की यह कि पूरी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है, जिसमें लेवलिंग, मिट्टी भराई का कार्य कराया तथा सॉइल इन्वेस्टिगेशन तथा प्रस्तुति भरने का कार्य कराया। यह कि जो कलेक्टर द्वारा मुआवजा निर्धारित किया गया है वो सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद किया है। वह कानूनी ढंग से सही है कि उस समय के बाजार दर से अधिक है। यह कि भूमि वर्जन वाद सीमा के अंदर नहीं किया गया है, अतः इस बिंदु पर बात चलने लायक नहीं है। यह कि जमीन का से अधिग्रहण किया गया है वो विकसित क्षेत्र नहीं है। रेलवे के अधिग्रहण भूमि में उपयोग लाने के लिए काफी खर्च करना पड़ा है। रेलवे इस भूमि का उपयोग लाने लायक बनाया है। यह कि पूरी में जो जमीन अधिग्रहण किया गया है वहाँ का लोकेलिटी में 4 में लैंड में भिन्नता के नेचर में लैंड में भिन्नता है। यह कि जमीन का अधिग्रहण पब्लिक परिषद का पब्लिक पर्पस के लिए किया गया है, लेकिन भूमि अर्जन का मुआवजा तय किया गया प्रारंभिक मार्केट से भी ज्यादा किया गया है। प्रारंभिक मार्केट से भी किया गया है। 2013 में इनका एग्जामिनेशन हो रहा है, बोलते हैं अधिग्रहण के समय हम थे ही जो है अब वही पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, जब कि वही पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ। यह कहना गलत है कि आवेदन का मुआवजा निर्धारित किया गया है और मुफ्तार कम किया गया है। यह कि मूल्यांकन इसका क्रॉस एग्जामिनेशन में भी जो आया है उसको भी पढ़ते हैं। हम पढ़ देते हैं। ठीक है पढ़ क्रॉस एग्जामिनेशन पास करते हैं लिखित रूप से पढ़िए ना, यही तो स्टार्ट होता है। लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि गवाही किए गए अधिग्रहित समय में पदाधिकारीगण नहीं था। मैं जमीन का लिखित रूप से अधिकृत नहीं किया गया। गवाही के लिए अधिग्रहण के समय में पदाधिकारी नहीं था। मैं जमीन का नाप योग नहीं किया है। इस किसी के आवेदन और नहीं जानता, आवेदक को प्योर से नहीं जानता। इस आवेदक का कौन सा प्लॉट है अधिकृत किया गया है नहीं जानता। अधिकृत जमीन के आसपास अस्पताल, स्कूल नहीं है, भी नहीं है। 1 किलोमीटर के आसपास में तहसील रोड से 7-8 से 100 मीटर की दूरी पर अधिकृत जमीन है। आसपास कच्ची रास्ता नहीं है। आप जो आपका एक विटनेस है OP1 का स्टेट का, पैरा 3 में बोला है इस इलाके में कोयलरी एवं फैक्ट्री वगैरह है। हम पढ़ दे पैरा 3 में बोला उपरोक्त दस्तावेज निर्देश ABC के बनने में मेरा कोई कार्य नहीं रहा है। मुझे प्रदेशों की जानकारी है। मेरे द्वारा भूमि निरीक्षण नहीं किया गया। जब भूमि का निरीक्षण ही नहीं किया जिनको क्या पता हुआ डेवलपमेंट है कि नहीं है। कुछ निरीक्षण कब निरीक्षण किया गया नहीं कर सकता। मैं 4 वर्षों से पतरातू अंचल में स्थापित हूँ। रामगढ़ पतरातू रोड NH1 उसी से NH1 ही से आता जाता हूँ। उससे आता जाता है। उस इलाका में रेलवे पहले से है। उस इलाका में कोलवरी एवं फैक्ट्री वगैरह है। उपरोक्त दस्तावेज केस तैयार हुआ ये बताने में DLO साहब सक्षम है। मेरे द्वारा किसी भी बिक्री केवला का मुआयना नहीं किया गया। ये राज्य सरकार ये रामगढ़ पैरा 6 रामगढ़ पतरातू रोड के आसपास की जमीन समान एवं समतल है।
पतरातू अंचल की सभी प्रकार की जमीन है, मुझे जानकारी नहीं है कि You कोड़ी see the entire area of Patratu, जो evidence इसमें आ रहा है, the entire area of Patratu, the entire area was subject to lot of activities. There are so many railway stations, there is so much of activity in terms of maybe that adjoining the village or wherever they are. But there is lot of activities over there. At least that is coming in the evidence. And other orders which have come up, it says that there was enough commercialization and there was some development, etc. And on that basis, flat rate was taken. Correct? And so far as this is concerned, इसने classification को तो reject ही कर दिया है. लेकिन classification की जगह too broad classification करके इन लोगों ने अपना किया है. लेकिन ये जो development है, जो development का evidence आया है, इसको नहीं consider किया. अब प्रश्न ये उठता है. Now the last question to you. There are two adjoining villages. एक में 6,000 के दर से हुआ है, दूसरे में हुआ है 7,000 के दर से. Right? As I see. No, that is admitted. अब दोनों final I am not- एक I am सेकंड, not एक disputing that. सेकंड. जो आपका एनेक्शर जो कडरू है, हुजूर। नहीं एक सेकंड, 7,000 के में हुआ है मसमोहना का सिर्फ Annexure कोना 4 मिलता है आपका थोड़ा सा मैप में, एकदम कोना जस्ट पॉइंट मिलता है. लेकिन आपका एग्जैक्ट एडजॉइनिंग है दाड़ी, तो आपका 6,000 से ज्यादा फीस निकल. क्योंकि अगर मान लीजिए ये सारे एविडेंस को देखें तो आपका जो इलाका है उतना भी एडजॉइनिंग नहीं है जो बाकी लोगों का है. बाकी तो सारे सेल्स और जो भी हैं हम लोग देख लेंगे. लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो आपका मसमोहना से कंपेयर नहीं करना है, आपका दाढ़ी दाग से 6,000 रुपए में. It will be. ठीक है, देखिए और डेट ऑफ एक्विजिशन सेम है सबका. सबका सेम है, मसमोना का सेम है, हाँ. दाढ़ी दाग का सेम है, कड्रू का सेम है, हाँ, और ये कोड़ी जो प्रेजेंट केस है उसका सेम है. ठीक. Batch of appeals arise from common judgment dated 23rd of March 2013. Arising out of different awards from LA case number 22 of 2004-5. Although a number of cases were disposed of by the common judgment, but total कितना cases है इसमें? 13 cases are before this court for consideration. All the cases, they are from village Kodi,
Anchal and PS Patratu, PO Barkakana, District Ramgarh. कुछ एरर हो तो बताइएगा, ठीक है? Altogether 42.27 acres of land of this village was acquired by the state of Jharkhand through the Deputy Commissioner Hazaribagh, within bracket now Ramgarh, for railways, for construction of a new railway line from Kodarma to Ranchi via Barkakana. The notification under Section 4 of Land Acquisition Act 1894 is dated 4/3/2003, which has been published, is dated 3/4/2003 and was published. Declaration dated 368/RAB. Declaration dated 368/RAB, dated 3/4/2003, published in the Gazette on 2/7/2003. The land losers, the collector fixed the compensation which the land losers accepted under protest and filed application under Section 18 of the Land Acquisition Act. And thereafter the matter was referred to learned district judge cum special land acquisition judge LR cases Hazaribagh for determination of fair and correct market value of the acquired land. And the learned judge was pleased to fix compensation for all types of dhan land at the rate of rupees 1319 per decimal with 10% appreciation for 20 months, and for all types of town land at the rate of rupees 1100 per decimal with solatium and other benefits and other admissible relief under the provisions of Land Acquisition Act, wide the impugned judgment dated 23/3/2013, which was sealed and signed on 6/4/2013. The claimants had claimed compensation at the rate of rupees 15,000 per decimal. But the learned court had fixed the compensation as mentioned above. Nay, but the learned court had fixed the compensation
at rupees 1319 for dhan land, and rupees 1100 per dismal for tar land. All type of all type. For all type of tar land and all type of dhan land. Categorizing them as two categories, namely dhan 1 and tar 1. In the memo of appeal filed before this court, the appeal has been valued by taking the compensation at the rate of rupees 6,000 per acre. 6,000 per dismal. Per dismal, rupees 6,000 per dismal, and consequently the compensation has also been, and consequently the court fees has also been paid accordingly. The learned counsel for the appellant, while assailing the impugned judgment, has submitted that the learned court has not properly considered the evidences on record, inasmuch as there was sufficient oral evidence placed on record that there was development in the acquired area. The learned counsel has further submitted that number of villages were acquired at one go, and the village Dariadag was Dharidag was, which is also which is having a common boundary with the village involved in the present case, Eastern side. is on the eastern side and was acquired by notification dated 3rd of April 2003, Same. and the compensation was fixed at the rate of 6,000 per dismal. In LR case number 188 of 2012, dated 28/3/2015. He has further submitted that ये 16 या 15 ही पता नहीं. Judgment date is 15 है. देखते हैं. he has further submitted that the witnesses had deposed before the learned court that the villages all falling in Patratu Anchal and all acquired for the land acquired for the purposes of the same railway project in the village Pochura, Bujuk Jamira, Teliatu, Sidwar Kala, Chotki Sidwar, Masmohana, Kadru, Daridag, Dudki, and others were acquired at one go, and they were acquired, and it was specifically deposed that the land
in all these area are of the same kind. The Learned Counsel has submitted that he has placed additional evidences on record through interlocutory application, wherein numerous judgments has been placed and which includes the judgment regarding the village Daritag, which was fixed at the rate of ₹6,000 per decimal, and in village Masmohana and Kadru, which are slightly away as compared to मसमोना तो सटा हुआ है the common boundary किसका है? कॉमन बॉर्डर तो ये मसमोना और ये दाढ़ी दाग का है। Kadru That, एक second. But the village Kadru, where the rate has been fixed at 7,000 is slightly away. But so far as Masmohana is concerned, the rate is 7,000 per decimal, which has been ultimately fixed by a judgment passed by this court. And at the northern corner, नॉर्थन और ईस्ट एक point मिलता है, a single point. ये ईस्ट साइड का जो नॉर्थन On the northeast portion, there is one common corner. But so far as Daritag is concerned, the boundary is quite long. यही आपका मैप. The Learned Counsel has submitted that. The Learned Court has not taken into consideration the map and has the Learned Counsel submits that if the map which was exhibited before the Learned Court is taken into consideration, लेकिन एग्जिबिट नहीं नहीं हुआ था. The Learned Counsel has submitted that the map has also been placed on record through the additional evidence. या हाई कोर्ट Before this court through the additional evidence, and the fact that they are adjoining to each other has been placed on record in the oral evidence of the witnesses. The Learned Counsel has further submitted that at least 7,000 per decimal be fixed, which has been fixed for Kadru and Masmohana. He has further submitted that merely because court fees has been paid by taking the value of land as ₹6,000 per decimal, the same is not fatal to the claim made by the appellants during the course of hearing by filing additional evidence. And if there is any differential court fees, the same can always be realized from the appellant. The Learned Counsel has submitted that it is also the duty of the court to fix fair market value irrespective of what the poor tribal persons have ultimately claimed before them. He has submitted that a parity is required to be maintained with respect to the contiguous acquisition of land of all adjoining villages which have land of similar nature. The Learned Counsel has placed the oral evidence of all the witnesses produced from the side of the claimants and has submitted that they have deposed
that not less than 3 railway stations, 4 4 railway stations are within a short distance of 2 to 4 kilometers. नंबर तो था दूर है Within a short distance of, out of them, three railway stations दो are. दो तो मेरे गांव के बगल में, एक पतरातू और एक बरका। They have stated मेरे that गांव पतरातू अंचल के बाहर में 2 है, एक रामगढ़ रेलवे स्टेशन और एक रांची रेलवे स्टेशन। they have stated that they have stated that there are 4 railway stations and the maximum distance is with regard to Ramgarh railway station, which is 5 kilometers away from the village. The Learned Council has also submitted that they have deposed that there are schools and other activities, hospitals, etc. on the village. Mining activity is also going on at the village, and there is lot of movement of trucks in the village. The Learned Council has submitted that there was enough development in the village, but this aspect of the matter has not been properly considered by the Learned Court. The Learned Council has in particular referred to the Annexure 4 to the interlocutory application seeking additional evidence which is relating to Masmohana, and has submitted that the Learned Court has taken into consideration that Masmohana village is surrounded by other villages, and Exhibit 2 was the judgment passed in connection with village Teliatu. Annexure 2 दारीदर का। उसमें था, उस case हाँ, right. में, Teliatu, which was also acquired in the year 2003, and compensation was given at the rate of 7,000 per decimal, and ultimately the court fixed the compensation at the flat rate of rupees 7,000 per decimal, taking that as the guiding factor. The Learned Council has also referred to the Annexure 2 to the interlocutory application and has submitted that the same relates to Village दारीदर। village Daridar, and in the same case also the compensation has been fixed at rupees 6,000 per decimal. इसमें कोई अपील नहीं। Just a minute. And he has submitted that ultimately no appeal was filed in connection with the said village. But the court had considered that the value of the land could not be fixed on agricultural classification, and a flat rate was required to be fixed. This was done by taking into consideration the awarded amount in other land acquisition cases and other judgments which related to acquisition of land
for the same purpose. The learned counsel appearing, कोई judgment आप in particular contiguous में एक judgment आप खाली बता दीजिए कौन सा प्लेस करना चाहें contiguously में जी डॉक्टर साहब, SCC 2017 वॉल्यूम 4 पेज 717 पारा 12, 13 एंड 14. The learned counsel has relied upon the judgment passed by the Honorable Supreme Court reported in bracket 2017 bracket close 4 SCC 717 paragraph 12, 13 and 14. To submit that, it has been held that when the lands are more or less situated nearby, and when the acquired land are identical and similar, and the acquisition is for the same purpose, it would not be proper to discriminate between the landowners unless there are strong reasons. The learned counsel has submitted that the same principle applies in the present case, and this principle has been applied while fixing the compensation in other cases relating to adjoining villages, including the village of Masmona and also Dalita. Okay. The learned counsel appearing on behalf of the respondents, on the other hand, has opposed the prayer for enhancement of compensation and has submitted that the learned court has taken all the evidences into consideration and has classified the entire land under two categories, Dhan 1 and Tar 1. And the learned court has further considered that the evidence did not show that the village was a developed village, and consequently the compensation as fixed does not call for any interference. The learned counsel has also submitted that the evidences show that the railway station, that although there were different railway stations in Patratu's Anchal, but the distance of railway station was between 2 to 5 kilometers. The learned counsel has submitted that under such circumstances, the method of calculation as reflecting in the impugned judgment, that is rupees 1319 per dismal for Dhan 1 land, for Dhan land, and rupees 1100
for tarred land with some appreciation, with some increase at the rate of 10% per annum for 20 months. for 20 months so far as tarred land are concerned. So far tarred land is concerned has been rightly used to arrive at the fair market value of the land. However, it is not in dispute that the land in the group of villages were acquired for the purposes of the aforesaid railway project, and they all fall in the Patratu Anchal. That is all. After hearing the learned counsels appearing on behalf of the parties, this court finds that the foundation, this court finds that there is no dispute with regard to any other aspect of the matter. Limitation आपको बहस करना है? Any other aspect of the matter except the rate of compensation so far as the acquired land in the concerned village is concerned, is involved. All the witnesses have deposed before the court that the land was acquired in different villages which are all adjoining to each other, namely Pochra, Pujul Jamila, Teliatu, Sidwara Kala, Chotki, Sidwara, Masmohna, Kadru, Darida, Dugdi and others. And they have all deposed that the nature of land is the same. It is further not in dispute that they all have been acquired for the purposes of railways and for the same project of the railways. The map which has been produced through the interlocutory applications into additional evidence reveal that so far as the village Kodi involved in the present case is concerned, the same has a long boundary which is थाना नंबर 72 कारू लिखा हुआ है लेकिन ये कटरू है। नहीं ये है ना 61 कोड़ी, ये तो कोड़ी है ना, कोड़ी 61 है, 71 है दाढ़ीदार, yes, which is almost rectangular and has a full side boundary on the eastern side with village Darida. And so far as the village Kadru is concerned, the same is at more distance and is towards Ramgarh circle. And so far as Masmohna is concerned, the same is towards the north and only a corner touches, and it is more towards Badkakana. This court finds that it is not in dispute from the evidences placed on record that the land are of same nature amongst all the villages, but considering other aspects of the matter,
the land is in more vicinity and contiguous to the village Daridak. The learned counsel for the respondents has also perused the land, and this observation is not in dispute. Okay? So we have perused the map, and this observation is not in dispute. This court further finds that all the witnesses produced from the side of the claimant has mentioned that there is mining activity of limestone in the village, and hundreds of truck, and there is movement of hundreds of truck in the area, and the area is otherwise quite busy. They have all stated that as many as 4 railway stations are within the vicinity of 2 kilometers to 5 kilometers. And there are schools, health centers, etc. in the village, and they have claimed that the village is a developed village. There has been cross-examination of these witnesses, and the distance of the railway station has been recorded during cross-examination. But the fact that there is mining activity in the village is not in dispute. It is also not in dispute that there are certain schools / health centers in the village, and there is lot of movement of trucks in the village. It is further important to note that so far as the evidence of the opposite party before the learned court is concerned, they have deposed that they did not physically visit the village, and they have deposed in the year 2013 and have stated that at the time of acquisition they were not the concerned officers. In view of the aforesaid evidences placed on record, this court finds that the finding of the learned court that the village is neither developed nor developing is perverse, and aforesaid aspects of the matter which has come during evidence have not been properly considered.
Consequently, the learned court has taken into consideration, has recorded that the adjoining villages were acquired for the same purpose. The learned court has, however, classified the entire land into two categories, Dhan 1 and Tan 1, and fixed the rate accordingly, thereby ignoring the aforesaid indices of development in the village. This is over and above the fact that through additional evidence, the appellants have placed on record the compensation which has been ultimately fixed for the immediately adjoining village, having a long boundary with that of the present village, namely Dadidar, which has been placed as Annexure 2 to the interlocutory application. And the said acquisition was also by notification dated 3/4/2003. The evidence on record revealed that the nature of land in Dadidar is also continuous and same as that of the present village. In the said case, the compensation has been fixed at the rate of 6,000 per decimal. सेम ऑथोरिटी के द्वारा लिया गया सेम प्रोजेक्ट के लिए दाढ़ीदार। It is also not in dispute that the acquisition was by the same authority and for the same project at the same time and in the adjoining village. This court is of the considered view that the various orders of compensation which have been placed on record, the most comparable one with that of the present village is that of Dadidar. And so far as the village Masmohana Annexure 4 is concerned, the compensation has been fixed at 7,000 per decimal, but the location of Masmohana is better placed as compared to that of village Dadidar. Consequently, in view of the judgment cited by the learned counsel for the appellant, this court is of the view that the compensation in the present cases is required to be enhanced to ₹6,000 per decimal. Thus, with other benefits policy वो सारा कुछ है. ये आपका मैप थोड़ा हम रख लें. आप एक तो ठीक है और आपका कौन सा केस में फिक्स किए हैं? कारू लिखा हुआ कारू. ये भी रामगढ़ से करीब है, ये मसमोहना से करीब. तो मसमोहना इधर बरकाखाना से करीब है और ये थोड़ा रामगढ़ से करीब है ना. इस मैप को रख लें. दो आइए की ग्रांट ऑफ इंटरिम ऑर्डर. इंटरिम ऑर्डर आप लोगों को क्यों चाहिए था?
आइए पेंडिंग आपका इंटरव्यू ऑर्डर 41 रूल 1 में पिटीशन दिए थे और इसको टैग हो गया एक साथ, तो उसकी जरूरत ठीक है, वो तो हमने कल ही ऑर्डर में लिखा ही दिया है, इसीलिए लिखा दिया अलग से, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बाकी आइए क्लोज कर देंगे, है ना? एडिशनल एविडेंस वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बाकी तो बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, बाकी सब तो बहुत दूर दूर है। ऑफलाइन इतना भी मिल गया। हाँ, मैप जो है ना, ये वाला जो मैप है आज गया है गोराई जी के पास एक सारा वेरिफिकेशन के लिए, ये फाइल भेजी तो मुझे वही काम इसलिए भी करना है। एडिशनल एविडेंस के लिए भी लगाया। अरे वो खुल नहीं रहा है ना, आपका ये मार्क किया हुआ है इसीलिए हमारे पास। गोराई जी को बोलिएगा इसको अलग से रखें मैप, जब भी कोई आएगा मैटर तो हम लोग को लगेगा। From credit list for finance student, please enter item 1, the PC 5781 of 2016, along with item 2, 3 and 4. Solutions. If your lordship would recollect that this MDG guideline which has been annexed as in the supplementary affidavit, that is under challenge by That's what the validity of that is said. If your lordship would, before hearing other portions, if your lordship would kindly take up the guideline itself, and then what was the purpose behind that guideline, and then other provisions also I'll I'm show. sure And you then, must have been briefed about their arguments. yes, बताइए क्या बोलना? if your lordship would take up annexure MDG guideline which is annexed as annexure 6 to the supplementary. One thing I wanted to know, what is the difference between other cases? There was some subtle difference between them amongst those. In all those, primarily they have challenged the MDG guideline, but there are penalties which have been imposed, they have challenged. All those are separate penalties, separate orders. Only one petitioner is common in both cases, but separate orders they have challenged. But in all the cases, all the agreement, there is an arbitration clause. So if they fail in this challenge to the MDG guideline, they have to go before the arbitral tribunal That's for if the they process succeed, of it's okay. arbitration. That's They, if they they- cannot if they- raise it. If they succeed, it's okay. There's no problem. Yes. So But if otherwise they have an arbitration. yes, because they had agreed that agreement is a part of their whole right is created by that agreement itself, Just a moment. and which Let me note it down. yes. Where is that arbitration clause? In the first one, your lordship may take up. It is running page 49, 48. That is part of the agreement. It last all questions, disputes and differences arising under or Yes. in relation to the agreement shall be referred to sole arbitration of so and so. Page And then 48. I'm skipping other portion, the last 4 lines of page 49, first paragraph, or 5 lines. Same clause, the end portion I'm reading. The award of the arbitrator so appointed shall be final, conclusive and binding on all the parties to the agreement and the provisions of Arbitration and Conciliation Act 1996 or other so and so, reenactment thereof and the rules made thereunder shall apply to the arbitration proceeding. So That's it also provides for finality of the arbitral proceeding. So therefore,
If they fail in their challenge to MDG guideline, then they have to raise all the other issues before the arbitrator. In all the cases, MDG guideline is under challenge. Yes. Yes, in all the cases where there is separate arbitration clauses, we have made a chart. Okay. You have given faithful performance clause and arbitration clause in all the agreements. Yes. So the moot question is whether it is valid or not. Yes. Then under such circumstances, see, there are two situations. One is that we would simply say, in case we agree, there is no problem, everything goes. In case we do not agree, we'll simply say that they have an arbitration clause. We cannot refer it to arbitration because there is no Section 8 petition filed over here. There is no question of our reference. Then they will have to invoke arbitration as per. Yes. And we do not know ultimately, you see, whatever be the order, both of you will ultimately proceed and challenge or not challenge. So there is no question of straight away sending you for arbitration yes. at this And time. in other this MDG guideline, there is an appellate remedy also. But in all the agreement, arbitration clause is called. Okay, we'll take care. So before your lordship takes up the supplementary affidavit where the MDG guideline is there, Yes. the faithful performance clause has already been placed. I am not repeating it. It only refers that, I'll read it, only 4-5 lines are there. The distributor undertakes faithfully and promptly to carry out, observe and perform all directions and orders or rules made from time to time by the corporation or its representative for proper carrying on the distributorship of the corporation. This is clause number? Clause number, your lordship would find this at page 43 of the writ petition. 40. Page 43 of the writ petition. Yes. So, I'm reading it once again. The distributor undertakes faithfully and promptly to carry out, observe and perform all directions and orders or rules made from time to time by the corporation or its representatives for the proper carrying on the distributorship of the corporation. So purpose is mentioned that for proper carrying on the distributorship of the corporation, whatever rules are framed, we are bound to follow it. And they signed to this clause. It is not that they did not agree to it. So this is a contractual obligation Absolutely. created by this. Absolutely. At best. Absolutely. And your lordship would recollect that in other cases where the Supreme Court has referred, mostly this has come relating to arbitration clause, that by reference to another clause, in another agreement, parent agreement, if there is an arbitration clause and the agreement signed between the parties, it refers to that document, then the arbitration clause is deemed to have been made in the original agreement also. So here is identical clause which refers to another document, and that document becomes a part of this agreement by reference. I could get it. I could get it. By reference to another document. Which reference are you talking? Yeah, There is a clear cut in the agreement between the two. In this particular agreement itself, there is an obligation to abide by your guidelines. Yes, that is what I am saying, that whatever rules would be framed, they would abide by. And Yes. it is obviously referring to the rules framed by the government oil company, which is MDG guideline.
Right. So they are bound to follow it. And then you will achieve see the, Perform all directions, orders or rules. it does not say MDG guideline, but it includes all, whatever direction, and the purpose is for proper carrying on the distributorship of the corporation. This was the Is this purpose covered by the statutory essential commodities? No, it is not covered. I'll show. That is the reason I'm placing now. Your Lordship, kindly turn to the marketing discipline guideline, which is there in supplement here. This one page I may be allowed to read the entire page, one page. Yes. What was the reason behind formulating this guideline? That has been mentioned. Introduction. Liquefied petroleum gas marketing commenced in India during the year 1955 at Bombay, Mumbai, and then Burma Shell. Since then, LPG market in India has evolved over the last 5 decades or more, from a minuscule level to the present position of around 18.8 crore customers on industry basis. So this is the reason. First, LPG marketing activities are expected to grow further because of the focus on expansion in rural areas. There is a network of over 16,500 LPG distributors in the country to meet the requirement of LPG consumers. LPG marketing is unique. LPG consumers are tied to the LPG distributors with a very little freedom to choose their distributor. This is one reason. LPG consumers are tied to LPG distributor with very little freedom to choose their distributor. Such a vast and complex marketing activity requires proper discipline among the LPG distributors from whom the entire LPG customers are serviced. LPG distributorship are appointed by public sector oil marketing companies and are governed by the terms and conditions of the agreement entered into between the OMCs and the distributors. The various clauses of the distributorship agreement spell out the several responsibilities that have to be performed by the distributorship as well as by the OMCs. Besides the responsibilities spelled out in the distributorship agreement, there are operating policies, procedures, and practices that are required to be followed by the distributors to serve the LPG customers. Further, there are prohibited activities that have to be avoided by the distributors. In order to ensure that the distributors follow operating policies, procedures, and practices, various actions to be taken against the erring distributors are made, which are called marketing discipline guideline. MDG form part and parcel of the instructions as issued from time to time under the relevant clause on faithful performance of the distributorship dealership agreement. These guidelines do not preclude any action under the distributorship agreement. The MDG for LPG distributorship have been in existence for over 30 years. The first MDG for LPG distributorship was introduced in 1982. It was subsequently revised in 1988, 1994, 2001, and thereafter in 2014. These guidelines need to be constantly updated to meet the challenges of IT, the growing customer expectations, ensuring the quality of the product and the services, enforcing discipline among the distributorship network, and prevent the malpractices in the sale of petroleum products. So entire reason has been mentioned, So and it is more like consumer protection, yeah, absolutely, consumer absolutely, oriented. absolutely, In cases of monopolistic trade absolutely. and essential commodities as petroleum. It is petroleum or LPG? Yeah. LPG. So basically, Your Lordship, for the consumers, if the service is being given by the
government oil For marketing. efficient services. Yes, that is the ultimate. And if there is no such marketing discipline guideline, then there would be absolutely nothing to prevent them. So everything. So even if it is there to prevent them by punishing them, but that will not serve the purpose. Absolutely. Because So I just want to know from you, from the provisions of Essential Commodities Act, what is the kind of remedies which have been provided for a violator? for a violation, only punishment 3 months, imprisonment, 7 up to extended up to 7 years. This is the range of, and your lordship, very Punishment and fine is also there. fine is also additional. And But fine goes to whom? that does not, So it is mentioned. it does not disclose. It mentions it goes to the, otherwise the fine goes to the state, always. Yes, In a criminal prosecution, the fine will always go to the state. if there's nothing written, then it would obviously go. It will go to the state. Probably your lordship has that essential commodities. And what is the maximum fine imposable In MDG, in essential commodities? There must be a maximum. quantum of, I'll read section 7, your lordship, Yes, that yes. section 7 itself says it only provides for punishment in the shape of imprisonment. If your lordship has essential commodities. Yes, I have. Yes. Section 7. ये है मेरे पास. हाँ, Section 7. Section 7. That is the only penalty. If any person contravenes any order made under section 3, and what is the order made under section 3 is the LPG order. That's right. LPG LPG order 2000. 2000, yes. So if any person contravenes any order made under section 3, he shall be punishable. So here is the punishment. In case of an order so and so, so and so, I am not going into minute details. In cases of reference clause 1 and 2, so and so, with imprisonment for a term which may extend to 1 year and shall also be liable to fine. So there is an imprisonment of 1 year in the first clause, and in the second one it says, in the case of any other order with the imprisonment for a term which shall not be less than 3 months, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. So here, imprisonment is the essential condition in both the cases of violation. Imprisonment as well as fine may be imposed. So imprisonment is must. And then all other clauses are there. There is no cap on fine. No. What about this provision, LPG order 2000? Is there any cap on fine? No, this does not, I could not, no. There's no such thing has been mentioned in this LPG order. Because it only says what has to be followed, that is all. So violation has been provided in the Parent Act itself. That means the essential commodities act. If someone violates the provisions of LPG 2000, then he would be punished in terms of His section. entire case is that whatever violation is contemplated and you can think of is covered by the LPG order. No. So First, Your therefore, Lordship, basic purpose was that I have to show the distinction. Here, Your Lordship, from reading of the reasons for bringing out this LPG marketing discipline guideline, it appears very clearly that the purpose was to control the distributors and the entire distribution network. That means at the time when it was being done, there was altogether 18.8 crore customers who were being serviced through 16,500 LPG distributors. No LPG order 2000
does not regulate the distributors, or it does not even protect the customers. It only says that if there is a violation, few of the clauses are common. Only few. I'll also show what would be the consequence. Now, Your Lordship may kindly see, because we have seen the reason for this MDG guideline. Now, Your Lordship may see section 3. What is the purpose behind bringing out this LPG? No, we'll come to that. First, this order, LPG order. Yes, LPG. There's something more also they had indicated. In internal page 18, you can come. That it also provides for making marketing discipline and guidelines, which is proposed to be adopted. Now, Your Lordship may see this probably is a part of Schedule 7. And in that, marketing discipline guideline has been provided. Now, this is parallel marketeer. What is parallel marketeer has been defined in the rule itself, that LPG order. If Your Lordship would turn to parallel marketeer, which has been defined in clause, definition clause. You see, this marketing standing company. This marketing discipline is not for regulating them. It is for only regulating the LPG distributors through government oil companies, because this marketing discipline guideline was made for and by the government oil company for regulating directly their own distributors. And this marketing discipline guideline is for whom? Is mentioned here. It could have been formulated separately, but it is for to govern what? Yes, it is to govern the parallel marketeer. From where do you get only for parallel marketing? Yes, because it is there in Schedule 7 itself, very top heading. Pro forma of information to be submitted. There are different categories. You just see. One is the pro forma of information. This is just one of them. Then next you have marketing plan for then 2.2. This is a part of pro forma itself. Yes. The entire thing is a part of this pro forma. This is the information to be submitted by parallel marketeer. And what is Who is a parallel marketeer? It is not in the illegal act. Now, government oil companies, It is not illegal. No. Because therefore I was showing the definition clause, because it is there in who is parallel marketeer, it is there in definition. Parallel marketeer means any person, firm, company, institution, association of persons, cooperative society or organization carrying on or any of the businesses of importing, storing, bottling, marketing, distributing and selling of liquefied So petroleum some gas. private activity is also permissible. Yes, that was. And therefore, under clause 11, 11 is dealing with parallel marketeer. So under clause 11, parallel marketeer is required to furnish this information. Yes. And it is while only for- furnishing this information, And- he has to give a reference to the marketing discipline and guideline proposed to be adopted. And it is whole purpose is, Your Lordship, for rating purposes. That is all. And this clause 6, which they have heavily relied, marketing discipline and guideline proposed to be adopted, is something for the purposes of evaluation of the parallel market. Yes. So if there are multiple guidelines, suppose different oil companies, they have their own guidelines. Then under such circumstances, if there is a parallel marketeer, a particular guideline amongst whatever is available, one of the guidelines will be applicable to evaluate his performance. That is all. And Your Lordship, Therefore, Yes. Therefore,
this particular provision and this particular mention in subclause 6 itself reflects that there is a concept of marketing discipline guideline Absolutely. under the statute. Yes, absolutely. And then they cannot rely on that they are bound by the marketing discipline guideline formulated by their own government oil company through whom they are distributor. So now they cannot say that because there is marketing discipline guideline in another, I don't know what is the logic behind bringing out that. That does not establish their case. Because it only, as your Lordship pointed out, it only supports that it is recognized mode. And under any circumstances, any fine imposed hereunder will not go to the oil companies. No. Fine will go always to the state. So here it would go to the state under LPG order. Under LPG Yes. order Yes. and under essential commodities, it will go to the state. Yes. But It would. under the LPG guideline, if there is a penalty, It would go to, yes. it will go to Yes. Absolutely. it will go It to would the go oil to company. the oil company. Relevant Whatever oil be the company, amount. Yes. So your Lordship may kindly first, because what was the basis, now the basis for this MDG guideline I had just read. Now your Lordship would take up what was the basis for this LPG order 2000. Now this was in terms of section 3 of the Essential Commodities Act. That's right. Now section 3, what it says, your Lordship may kindly see. What was the purpose mentioned in section 3? Only clause 1 I'll read, section 3. Power to control production, supply, distribution of essential commodities. If the central government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so for, now your Lordship may kindly think, maintaining or increasing supply of any essential commodity. So first is for maintaining or increasing supply of any essential commodity, or for securing their equitable distribution and availability at fair prices. These are the only two grounds. I may be allowed to read this line once again. If the central government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so for maintaining or increasing supplies of any essential commodities, or for securing their equitable distribution and availability at fair prices, then this is not applicable to the portion which is there in bracket, or for securing any essential commodity for the defense of India or efficient conduct of military operations. It may by order provide for regulating or prohibiting the production, supply and distribution thereof and the trade and commerce thereof. So it does not even contemplate the reason that how the distributor or the government oil company would be dealing with the distributor and the ultimate consumers. That provision is not there. So this was the reason for which the LPG control order was 2000 was brought. So, by virtue of this LPG order, it will be the oil companies who are going to be covered, or even the petty distributors, everybody is covered. It is general. Few, but majorly, Your Lordship, it is for parallel marketeer and government oil companies, and few of the offences which have been mentioned, those is applicable to all. That means everyone. That means a person. They are basically offences and penalties. Yes. A person cannot take out LPG from one and fill up in another, because that would be a risky. Therefore, it has been mentioned that no person shall
fill any cylinder with liquefied petroleum gas or transfer liquefied petroleum gas from one cylinder to another or from one container to another unless authorized by so. So this, Your Lordship, there is some reason behind enacting this. Now, 5 to 6 lines I had mentioned, bullet points I had made for distinction between the two. Have you got it for me also? I'll supply a copy. बताइए. Only last line, Your Lordship, may see if I was making notes of last line where I have mentioned. That's right. Merely because there are some wrong. This is what you want to say. Yes. Overlapping of LPG order and MDG guideline. There may be few typographical errors here. So, first point is violation of LPG order 2000 is visited with imprisonment, whereas the purpose of MDG guideline is to provide for monetary consequences to regulate and discipline the distributor so that the LPG consumers ultimately get the quality service. So this was the distinction. Second is the purpose of MDG guideline has been given in page 6 of so and so, and the purpose of LPG order is contained in section 3. So this I have already read. Then, therefore, from the perusal of the section 3 under which the LPG order has been made, it shall transpire that the same is primarily for the purposes mentioned in the said section. The same does not cover the reasons for which the MDG guidelines have been issued. So, if Your Lordship sees section 3, then it does not cover the reasons for which the LPG guidelines have been issued. MDG guidelines have been issued for regulating the large network of LPG distributors in the country so that they can give quality services to the ultimate consumer. MDG guideline provides as to how the government oil company would deal with its LPG distributors, whereas LPG order is general in nature. One MDG guideline is a part of the contract by reference. Legislature cannot be expected to make a law even as to how the government oil companies would be dealing with their own distributors. MDG guidelines are part of the agreement itself, whereas LPG order is part of the statute. MDG guideline only provides for monetary consequences of termination of distributorship agreement in order to regulate or maintain discipline among the distributors, whereas LPG order provides for punishment in the shape of imprisonment. Essentially, MDG guideline provides for a civil wrong and LPG control order provides for a criminal wrong. Most of the irregularities, wrongs provided in MDG are not provided in the LPG order. Chart dealing with the same is we have made a chart. It is only few irregularities, wrongs provided in MDG which are provided in LPG order, but that by itself does not make the MDG as illegal or without authority. There is no prohibition in law that a criminal wrong cannot be a civil wrong. On the contrary, it is settled law that wrong can be both criminal wrong and civil wrong. Thus, merely there are some wrongs which are provided in the LPG order, criminal wrong, and also provided in MDG order, civil wrong, cannot make the MDG as illegal or without. So these are the basic grounds of our to support the MDG guidelines. Where is the chart? Yes.
You have say stated not covered, but you have not referred to the Yes, exact yes, yes. provision. It should have been. How do I compare? Yes, yes. वो होना चाहिए था. I get लेकिन you. आप कहाँ से इसको वो होना भागोगे? चाहिए. Comparison is very नहीं, important. वो होना चाहिए था. I do agree. It should have mentioned as to what would be the consequences in LPG order and where it is covered. Where and it then- is covered, where it is not covered, to what extent it is covered. चार्ट बनाए तो कंप्लीट चार्ट बनाना. इसको रिवाइज कर देंगे आप चार्ट को और आपको एक दिन के अंदर दे देंगे. क्योंकि अब हमने उसको ज़्यादा दिन नहीं है उसको. ठीक है. So we'll give it within an hour's time. We have handy. We'll refer the clause number. नहीं आपको क्लॉज प्लेस करना पड़ेगा. ऐसे नहीं मानने वाले. We'll place it. Now, Your Lordship, one judgment would cover entire Supreme Court judgment. We had already filed. Let us assume that there is a control order and MDG guideline both, and both ultimately went before the Honorable Court, and Your Lordship, that would clarify of many of the things. Which is that judgment? It is there in the compilation I here. just. We had given a compilation. Case was on behalf of the respondent. There is a chart. WPC 5004. Yes, SCC Online Delhi. No, those are related to those also we will be relying upon. But Your Lordship, main is RM service, which is at page 62. 62. This is the closest which we could get. It is dealing with MDG. Yes, Guidelines. yes. Therefore, Their MDG contention has- is that this particular reference in the Essential Commodities Act regarding the MDG guidelines was not placed before the court while deciding this judgment. This is what they have been saying. Your Lordship, with regard to this, I think it with deals with the regard to this order one- also. One more issue I had raised with respect to this judgment, which was, my lord, referring to para 15 of this judgment. RM service. So they say it's a judgment on concession. This is what they say. Your Lordship, may allow me to place the Yes, relevant please. portions. Obviously, facts were slightly different, but then what was the ultimate challenge before the Honorable Court? If Your Lordship comes to the first paragraph, what was there? The challenge in the present appeal is to an order of the division bench of the Guwahati High Court passed in so and so for maintaining an order of the single judge of the High Court whereby termination of dealership of respondent number 1 for violation of marketing discipline guideline was set aside. So in that case, the dealership was terminated and then it was set aside by the Honorable Court. That was upheld by the division bench. Then the matter went to the Honorable Supreme Court. Then para 6 years. There was certain tests that were conducted. Then on the basis of test report dated so and so, the dealership was terminated on 25/4/2014 after serving another show cause notice dated so and so, wherein it has been stated that the deviation was observed during inspection pertaining to stock variation and non-availability of reference density. The appellants have mentioned the details of non-conformity so and then para 9 years. The dealer challenged the termination of dealership before the Guwahati High Court. The learned judge allowed the writ petition on so and so, holding so and so. So this is then para 10. The learned single judge also found that the stock variation is not critical irregularity within the meaning of clause 8.2 of the guideline and cannot entail termination of the dealership. The division bench of the High Court in appeal agreed with the findings recorded by the learned single judge, and then what was argued before the Honorable Supreme Court, that is there in para 13. This additional ground was taken before the Honorable. Para 13. After 4 lines, if Your Lordship, the main portion is there. On the other hand, Mr. Goswami so and so, it is further contended that in terms of clause 1.55 of the guidelines,
the motor spirit and high-speed diesel prevention of malpractices in supply and distribution order 2005, that is the control order issued by the Government of India, is applicable. The said order provides for a procedure of search and seizure. The search and seizure in terms of Section 7 of the Control Order issued under Section 3 of Essential Commodities Act can be effected only in the presence of two independent witnesses as is required under Section 100 of CRPC so and so. Then, since the sample has not been taken in the manner prescribed in the order read with Section 100 of the Code, therefore the termination of dealership is wholly illegal. Then, para 14. The first issue required to be examined is whether the appellants were required to follow the procedure under the control order read with Section 100 of the Code. The control order has been issued under Section 3 of the Act. Such Act has been enacted for control of the production, supply and distribution and trade and commerce of certain commodities. In respect of high-speed diesel and motor spirit, the control order is issued for regulation of the supply and distribution of prevention of malpractices. Section 6A of the Act provides for confiscation of the essential commodity, whereas Section 7 of the Act makes any person who contravenes the order made under Section 3 liable for criminal prosecution. Therefore, we find that the effect of issuance of control order is that in the event of violation of such control order, any person who contravenes any order made under Section 3 of the Act, the control order, he is liable to be punished by the court. Therefore, the violation of control order has penal consequences leading to conviction. The provisions of search and seizure contained in Section Clause 7, read with Section 100 of the Code, will come into play only in the event a person is sought to be prosecuted for violation of the provision of the control order. Admittedly, in the present case, the dealer is not sought to be prosecuted for the violation of the violation of the guideline. Therefore, the procedure for drawing the sample, which is necessary precondition under the control order for prosecuting an offender, does Sharp distinction is being made in the criminal liability and the civil liability. Yes. The consequences and the scope of Essential Commodities Act is apparently being distinguished. So that is punishable and that is a criminal wrong. And your Lordship, ultimately, what the Honorable Court says, the dealer has entered into an agreement on so and so. It is not disputed that the dealer is bound by the guidelines issued by the Public Oil Marketing Company. So here was exact cases here. Then para 16. The guideline, as mentioned in subclause 1 of clause 2.5 of the guideline, is to streamline the functioning. That is, the oil companies should not arbitrarily or without any justification send sample for testing at the suit bill. And then para 18, your Lordship, last 4 lines. In this case, since the stock variation was beyond permissible limit and the sample failed, therefore the action was rightly taken under clause so and so of the guideline, which is a critical irregularity read with subclause so and so of the clause so and so of the guideline. The judgment referred to by learned counsel for the dealer are not applicable to the facts and circumstances, as in both cases the action taken by the oil companies was found to be in violation of the principle of natural justice, as no notice was served upon the dealer. But in the present case, after the failure of first sample, the test report so and so, the dealer was informed, who opted for testing of so and so. And then last 4 lines of the para 19. The dealer was informed the result of the second test and was also given a show cause notice as to why the dealership should not be terminated. Therefore, the action taken against the dealer is in terms of the guideline as a consequence of contractual obligations of the dealer. So exactly in our case also, the dealership has not been terminated, but whatever action has been taken, that has been taken in terms of the guideline And contractual obligation. yes, as a consequence of the contractual contract. So your
primarily your argument is so far as marketing discipline, it is a parallel provision Yes. and there is different intention as when compared to Essential Commodities Act. And apart from challenge to marketing discipline guideline, this court may not enter into any other dispute on account of the Arbitration. Yes, absolutely. even if whatever plea they have taken. Because they are Every plea can be taken before the absolutely, absolutely. And as regards personal hearing or principles No, of we violation of principle of natural justice, in all the cases, notices, show cause notices were issued. Is there any law which says that arbitration cannot take care of natural justice? Of course, the validity of a provision, if it is found to be against the Article 14 or against the statute, the Then- arbitrator cannot decide that. Absolutely. The consequence of violation of natural justice is not a straitjacket consequence. So And- there are many nuances to it. So, anyways, this is And your last year, argument. we had already relied on two division bench. First was Delhi, and then another was Karnataka. My learned friend was relying on a single bench passed by the Karnataka, which actually was set aside by the division bench of the Karnataka. So that is clear from He relied on last. I don't know. Yesterday he has relied on. Last Time last when round the he law was. changed. Initially, when the writ was filed, that was the law. But I have not relied in my submission before. But see, we have to be very very clear on that. कौन सा आपका ये जो judgments आप place कर रहे हैं? It was by Delhi High Court. Delhi High Court, First. Indian Oil Corporation. Yes, yes. 1 to 36, correct? You are Yes, relying yes. upon this. Exactly same thing was under challenge. Okay. MDG guideline was under challenge, and what had happened in this case, Your Lordship? In this case, few of the clauses were challenged and they were set aside, and then the matter went to the division bench, which ultimately found the order MDG guideline to be valid and proper. What about this IBP company versus this is Karnataka? Yes. This is division bench? Yes, division bench. Okay. So they relied upon single bench. Earlier they had Naturally, it relied was on. there, that was the law Yes. in Karnataka. But now that was dealt with by the division bench, and it ultimately set aside that. Partially or anything like that. As far as I recollect, subject to correction, partially it upheld You the. have not relied upon single bench judgment, so we don't need to worry. Submissions which are being made, I should clarify that it is not that setting aside in totality of the single bench order by Karnataka High Court. Which was a single bench order? It is there, if your lordship may see. If your lordship is looking at division bench order. Yeah, I'm looking at the division. These are the benches. And your lordship, in Delhi High Court judgment, all the other judgments have been considered. All the judgments. Including Karnataka? Throughout the country it has been. That it was, what it was mentioned, I'll only point out 2-3 places. Para 43. In Delhi High Court. 42, 43. First, what was there in challenge in para 9 and 10, it has been mentioned. The writ petition being so and so is preferred before this court, challenging inter alia the amendments to the MDG 2012. And para 10, these writ petition have been decided by the learned single judge by so and so impugned judgment, where certain clauses challenged in the petition have been struck down, while the others have been read down, which according to the appellants has the effect of nullifying, negating, diluting the amendments of MDG 2012. And then para 13 it mentioned that earlier also the challenges were made and those were decided that MDG was valid in para 13. And then relevant is page 37, reasons and analysis. May I read this one? Yes. Clause 43 of the dealership agreement, appellants OMCs entered into dealership agreement with the ROs
clause 43 of the dealership agreement reads as under, and then I'm not reading the Yes, clause. that's 39. Right from the year 1981-82 to maintain discipline in the operation of retail network of thousands of petrol and diesel HSD retail outlets of OMC's oil companies throughout the country, the marketing discipline guidelines were formulated and issued. These MDGs have been reviewed from time to time. Clause 42 of the model agreement, which has already been upheld by various high courts, replicates the contents of the clause 43 of the dealership agreement in question. By virtue of powers conferred by clause 43, the MDGs have been issued. Thus, this provision is a source of the power of OMCs to formulate the MDGs. Power of OMCs under earlier MDGs was subject matter of challenge in several writ petitions in various high courts, including this court, and was upheld, holding that OMCs have the power and jurisdiction to issue MDGs to regulate the ROs, and that the RO dealers are bound by these guidelines. And then all the cases have been recorded. Para 42, 43, then para 44. In view of the aforesaid decision and after perusing and examining clause 43 of the dealership agreement between OMCs and RO dealers, this court is of the clear opinion that the OMCs have the power, jurisdiction and authority to issue MDGs, which would include making an amendment thereto and are binding upon RO dealers who have consciously and out of free will entered into dealership. So here also, Your Lordship, they consciously entered, and that clause itself said that they would be bound by it. Now, after having entered into an agreement and taken advantage of the dealership agreement, they cannot turn around and question the dealership clause, that clause itself. And to Karnataka. rise today for the reference. Yes. Your argument is over. Oh. As regards MDG, Your Lordship, my bullet points are sufficient. And your specific plea is that so far as merits is concerned, it is arbitration. Absolutely, absolutely. Because the clause itself, there is an arbitration You clause. want to respond? Madam, I would like to respond on rejoin on the legal issues, sought submission on that, and the factual issues, my lord, I may be permitted to highlight again. Can you do it on the next? आप मुझे अपना वो वाला नोट दे दो। हाँ, ये खोज रहे हैं हाँ हम अब अभी तुरंत मिला नहीं, हम ये किस ये में किए हैं उसको। इसको टैग करो। एक दूसरे केस का नोट इन्होंने दिया था, it was a very elaborate note on limitation. Limitation is a regular issue in all the civil matters. Yes, yes, it is. सारा कोई केस बिना लिमिटेशन के पॉइंट के रहता ही नहीं। देखिए WPC number 5871 sorry 5781 of 2016 and other analogous cases. Regarding also further respondents have concluded their argument. Post this case for the rejoinder of the petitioners on आज कितना तारीख होगी? 4th. Ninth को रख लेते हैं। Are you comfortable? Madam, I am out of this. 8th कोई बात है। आपका कोई मैटर 8 तारीख को फिक्स हुआ है? 7th copy. Second. 15th. ठीक है 15th को। 15th? Yes. आपको बात डिफेक्ट वाला सब कर दो। कुछ ये ऑर्डर्स वाले मैटर है इसको कर लेते हैं। From supplementary list for orders with effect item 14. First appeal 7842 of 24 5.
कल से आ जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट अपनी फाइलिंग नंबर 7842 और 24 रिकॉर्ड आ गया इसमें। आपका रिकॉर्ड आ गया थे। Defendant number 2 has not appeared, has not filed any details. She has not even appeared. तो आप क्या Order 22 root 4 में petition filed की. IA number 401. आइए नंबर 401 क्या चीज का आइए है? ऑर्डर 2244 दिस इज फॉर डिपेंडेंट नंबर 2। हाँ, इसमें इन्होंने डिफेक्ट लगाया था कि डिफेक्ट पहले देखा था। पैरा 5 में हमने लिखा बताइए पैराग्राफ। ऑर्डर 22 root 3 defect number 22 root 22 3. The respondent number 35 to 39 does not find in the CC of Tribune order and defect number 2 of Tribune order is missing in the appeal. However, it is mentioned by the learned counsel of page 6 that defendant number 2 has died and respondent number 35 to 39 are legal. But for the same purpose, steps for substitution may be taken. This was the defect. So then thereafter I file an application. IA number 10289. One 102 289. Under Rule 98 of High Court of Jharkhand Rules 2001, read with 151. My What prayer does it was say? Rule 98? Rule 98. What does it say? Rule 98. High Court principles. Jharkhand of High Court Rules. If a person has died during the agency of the trial, then this rule provides that those can be arranged as a respondent in The legal memo. years. Memo. The legal years. As a legal years can be, and an affidavit to that effect can be filed. If the court will grant, then they can be allowed to be placed. So That you petition want this IA to be allowed? I have filed both hearings. First of all, this I had initially filed this as per me also, that a person who has died, for one reason or another reason, the legal heirs could not be brought on record. Trial proceeded and judgment and decree has been passed and suit has been dismissed. Now we are pursuing an appeal. So right now it is a decree whereby no relief has been granted. That's It is but not- if any relief is If required, suppose relief is then required, they need to be heard. if suppose if the relief is required and if the second application which 22 rule 4 which I have filed, if suppose it is allowed, then the legal heirs will be debarred from appearing and the decree which will be passed against them, it will be as if that the original defendant number 2 was alive. That what is order 22 is. That's This is the positioning zone. So far as the defect is concerned, it has to be ignored. Because I cannot be made remediless. I cannot be made remediless. so. But notice has to be issued to these persons. I have already arrayed them. So far as the second petition is concerned, thereafter when the petition number 1, number 12889, the petitioner's bench was not satisfied, then I filed this petition. Because this is as per the law. Your Lordship may kindly have order 22 rule 4, your Lordship may kindly.
4 I have quoted also. I am reading. 4 says procedure in case of death of one or several defendants or the sole defendant. Then I would like to place 4. The court, where it thinks fit, may exempt the plaintiff from the necessity of substituting the legal representatives of any such defendant who has failed to file a written statement, or who has, having filed it, failed to appear and contest the suit at the hearing, and a judgment may in such case be pronounced against the said defendant, notwithstanding the death of such defendant, and shall have the same force as as if it has been pronounced before the death too. So suppose your lordship may That's allow right. that petition, my petition, then It would be better to issue notice to them, because you do not know what kind of right. Maybe that they might claim some joint right with the deceased. No, it is the partition suit. Therefore, It is the therefore, partition suit. It is the partition therefore, suit. under such circumstances, And they do have a right, and we too have a right. But so far as the main contesting defendant, including defendant number 2, they had contended that no partition is already been made. so therefore they are Necessary. necessary parties. So, So why that should is the we reason- invoke this Order 22 Rule 4? That is the reason I have filed that application. But unless and until the defect is cured, nowadays, my lord, after the I will ignore the defect and issue notice. your lordship may ignore the notice, may ignore the defect, my lord, the appeal may be admitted, and their array, my lord, the arraying of their arraying as a respondent may be subject to any objection. That's right. That would be the proper order. So no notice need be issued on IA number 401 of 25. 401, your lordship, I will withdraw if your lordship will Yes, ignore. I that. will ignore that. Yes. लिखिए FA number 7842 of 2024. The learned counsel for the appellant has submitted that 2 interlocutory applications are placed on board. One is IA number 10289 of 2024 and the other is IA number 401 of 2025. He submits that both the interlocutory applications are in connection with defect number 22(3). 22 within bracket 3. He has also submitted that the deceased, namely Mosmad Hamida. Mosama Mosmad Hamida. Hamida Begum, Hamida Khatun. Hamida Khatun, Defendant number 2 of degree under the appeal. defendant number 2 of the decree under appeal, Yes. never filed any written statement, Yes. Not contested. nor contested the suit. Yes. And therefore, in terms of Order 22 Rule 4. Rule 4, within bracket 4, her legal heirs need not be arrayed as a party, and still the court can proceed. And to this effect, IA number 401 of 2025 has been filed. However, since the matter is arising out of a partition suit, And also for deletion of their name in the memo of appeal. and also for deletion of their name in memo of appeal. However, he has submitted that the matter is arising out of a partition suit. Therefore, it would be proper if the notices are issued to the legal heirs also. And for that, IA number 10289 of 2024 has been filed. He submits that the defect pointed out by the office be ignored, the appeal be admitted, and notices be issued, subject to any objection that may be raised by the respondents. Legal heirs. By the legal Legal heirs Or other respondents. or other Other. respondents. There is no other defect. No. He has submitted that except the aforesaid defect regarding 22(3), defect number 22(3), there is no other defect. Considering the aforesaid submissions, the defect number 22 within bracket 3 as pointed out by the office is ignored for the present. The
let this appeal be admitted. Notice be issued to all the respondents. All the respondents. The legal heirs of the original defendant number 2 have already been arraigned as party Yes. respondent in the present proceedings, Respondent number 35. which are respondent number 35 to 39, as stated by the learned counsel for the appellant. Record has already. And the records have already been received. आप ordinary process में कर दीजिए. Appropriate order will be passed on the interlocutory application upon appearance of the parties. ठीक है? किसी को कोई objection होगा तो बात करें. ठीक है, सबको notice ordinary process में कितना time लगाएंगे? 2-3 हफ्ते का समय. 1 महीना का समय. By 2nd of May. Post this case, awaiting service report on 14th of July. आइए दोनों पेंडिंग है, आने दीजिए सर. Along with the आइए, आप आइए में भी कर लीजिए notice, है ना? The notice should accompany a copy of both the interlocutory Both the applications. interlocutors. Both the interlocutory applications. That notice will go to all respondents or? All respondents. किसी को कुछ objection करना होगा अपना करके निपट लेंगे ना, क्योंकि ये डिफेक्ट रहना अच्छी बात नहीं. ऑफिस नंबर कर लेगा ना केस को, रजिस्टर हो जाएगा. हाँ, register हो जाएगा. आप नंबर ले लेंगे, उसके बाद नोटिस नंबर में डाल देंगे. हाँ, एडमिट. Office is directed to put appropriate number in this case. Registration. Item 15 contains Rule 211 of 2023. हाँ, बोलिए. ऑर्डर नहीं कंप्लाई हुआ. the interest has not been paid. इंटरेस्ट आपने पेमेंट नहीं किया. क्या हुआ? फाइल किया खाली कोई और देख लिया जाए. हम लोग का कहना ये है हमारे पास कि ही वाज अर्लियर वर्किंग इन सेटलमेंट ऑफ. उससे कोई मतलब मेरा नहीं. खाली सुन लिया. हम उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे. जो है हम खाली बता रहे हैं सर, बिकॉज़ इट इज माय ड्यूटी टू ब्रिंग दिस फैक्ट्स. अब लास्ट मिनट पर चूंकि इनका कोई हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट राउंड में द कंटेम्नर फर्स्ट राउंड में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन इसका डिसाइड करके रिजेक्ट कर दिया. सब्सिक्वेंटली फिर जब हुआ कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा, आप ही को बोथ डिपार्टमेंट्स आर सेम माइनर सेट ऑब्जर्व्ड आल्सो, तो फिर इनका जितना भी सर्विस रिकॉर्ड था वो वेलफेयर ऑफिस में था. वहां से हमने मंगाया. दिसंबर में इन्होंने अपना बैंक डिटेल्स भी दिया है इसी 2024 दिसंबर में. तब जाके जनवरी में हम लोगों ने उनको पेमेंट किया है. तो हम लोग कहना है मतलब कि इसमें इनका भी कुछ रोल है. पूरा डॉक्यूमेंट्स इनका डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर में था, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था. एंड ही वाज ऑन डेप्यूटेशन का सर्विस सुपरवाइजर वाज असिस्टेंट एंड ही वाज क्लेमिंग पेंशन एज असिस्टेंट. तो फिर हम लोग वेलफेयर से कम्युनिकेट किए. उसके बाद फिर हम लोगों ने मुहर्रिर का जो इनका ओरिजिनल पोस्ट था उसके बेसिस पर हम लोगों ने डिसाइड किया, पूरा रिकॉर्ड मंगाया. आपने सब बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऑर्डर है सो आप कंप्लेन. नहीं तो वही कहना है भाई कि जो ऑर्डर है कि अगर नहीं पेमेंट होता है तो जो इसमें कहना है उसको ये कहना है कि इट वाज बिकॉज ऑफ ऑल दीस थिंग्स. व्हाटएवर बी द रीजन, इन्होंने खुद अगर आपका कोई ऑर्डर आप टाइमलाइन में कंप्लाई करने की स्थिति में नहीं थे, एक्सटेंशन फाइल करते हैं हम आपको एक्सटेंशन. दिसंबर 24 में इन्होंने अपना खुद ही सब कहानी हमको मत सुनाइए. कहानी जो लिखा है मैंने एक बताया. बात बताइए, इतना आप इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, इनका पैसा था ना, इनका पैसा था, आप एंजॉय किए. कॉम्पनसेटरी है, पनिशमेंट थोड़ी है. भाई आपने इनका पैसा रखा, जितना भी दिन रखा, इस कॉम्पनसेटरी. खुद माइलर से ऑब्जर्व की जो लेटर से इनको रिलीव किया गया वो लेटर भी सेटलमेंट ऑफिस को नहीं मिला. कोई फर्क ये नहीं. ऑर्डर इतना आया. मत लड़िए, इतना मत लड़िए. लड़ नहीं रहा. खाली एक लाइन सिटीजन को मेरा इंटरेस्ट देने के लिए. अब मेरा एक प्रेयर है, खाली एक लाइन ऑब्जर्व किया जाए माइलर कि दिस सो को ये अनएक्सेप्टेबल खाली लिख दिया जाए. हम क्यों लिखेंगे? आपके कहने से हम लिखेंगे. मतलब ये तो नहीं, ऑर्डर है, कंप्लाई करिए, सिंपल सा बात. वही एक लाइन लिख दिया जाए उसकी. ये तो लिखा ही हुआ ऑलरेडी. एक लाइन कितना फिर भरने क्यों आज लिखे लिख दिया हैं? जाए. व्हाई शुड वी राइट अगेन? So was in file but order has not been complied. ऐसा एक लाइन इंडिकेट कर दिया. अभी
अभी एक और शो कॉज फाइल कर दिए हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बोल अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा है। कौन है शो कॉज जो फाइल किया? उनको रिटायर नहीं होना जीवन में? होना है ना? कौन है? ये सेटलमेंट ऑफिसर मतलब डिप्टी कमिश्नर रांची, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो शोकॉज फाइल हुआ इसीलिए है, क्या बोल रहे हैं इसमें? इसमें कुछ इसीलिए तो कुछ है ही नहीं। नहीं जो इसमें लिखा हुआ है बताया। We will not accept this. यस मैम, हम मानते हैं खुद। देखिए counsel for the parties are present. Counsel for the opposite party submits that a show cause has been filed by opposite party number 8, explaining the reason for not remitting the interest amount as directed by this court in order dated 9/11/2022 passed in WPS number 4040 of 2020. However, it is submitted that other dues have already been cleared. The fact that other dues have been cleared is not in dispute from the side of the petitioner. This court is of the considered view that a timeline was granted by this court to comply the order, and the question of entitlement of interest arose only when the timeline exceeded. At no point of time any petition seeking extension of time was filed, and through the show cause, the delay is sought to be explained. Such kind of explanation is not acceptable to this court. In case the authority is unable to comply the order, it is for the authority to file appropriate petition seeking extension of time. Under such circumstances, at this, the learned counsel for the opposite party has submitted that he shall seek instructions and file appropriate compliance report. How much time do you need? 4 weeks. He prays for 4 weeks. Post on 7th of May in the supplementary process. दो साल लगा दिए ना? टाइमलाइन आपका कब खत्म हुआ था? वो अक्टूबर में ऑर्डर था, उसमें एक हम लोग रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करके इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिए थे कि आप यहाँ ज्वाइन ही नहीं किया, आपका कोई रिकॉर्ड यहाँ नहीं, हम लोग आपको नहीं देंगे। देयर आफ्टरवर्ड्स अगेन द मैटर वाज ओपन, कोऑर्डिनेशन करवाया गया। मान लो सेड ऑब्जर्व की दोनों ही डिपार्टमेंट सरकार के हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ हम पर्सनली लग के करवाए इसको, लेकिन ये इस बारे में जो है मान लो से करेक्टली ऑब्जर्व मान रिकॉर्ड सब इनका वेलफेयर में था, इनका जीपीए भी प्रोसेस वेलफेयर से ही हुआ था। थोड़ा सा यूनिक केस था ये, क्योंकि एक सप्ताह पहले इनको रिलीज कर दिया, वो वहां मिला ही नहीं चिट्ठी। The entire dues in this case relates to post-retirement benefits of the petitioner, and the interest is only at the rate of 12% fine. जो ऑर्डर तो रहेगा बस